tested, of course, because you need to know if they're going to spread it to everyone else. So they've found a lot of people who were admitted for other medical reasons who seem to have SARS coronavirus 2 as well. 76% of the patients are incidental COVID admissions. So 76% of the patients with COVID were just found to have COVID in hospital, that they weren't admitted for COVID-related complications. This is really very reassuring news. And the South African authorities are saying this is a very unusual picture, and it's also occurring at other hospitals in the Gauteng region, which is again the region where this all started in South Africa, even though it probably came from Botswana. The high proportion of COVID incidental admissions may reflect higher rates of community transmission compared to previous waves. Now, I haven't got full data on this. I've been looking at this morning, and the sewage surveillance in South Africa, the prevalence of new infection has just gone off the scale. It just seems to be absolutely huge. This Omicron variant is just completely exponentially taken off in South Africa, and in most provinces now. It's absolutely huge number of community incidents. Now, the good point about this, of course, is that means we're going to get massive herd immunity really quickly. And that's why this is so, one of the reasons this is so encouraging. But anyway, getting back to the direct communication from the South African authorities. So it's absolutely taken off, may reflect higher rates of community transmission compared to previous variants. So the first 3 waves, it wasn't as fast as this. This was absolutely taken off. There's massive transmissibility of Omicron. But that's not translating into higher admission rates for a primary COVID-19 diagnosis. This is just brilliant news. So there you go. That's the main points of today's talk. Give you a short time. So prevalence absolutely taking off in South Africa, no question about that. We know it's Omicron from various sources. The actual hospital concerned here, the Steve Biko facility, they can't actually detect whether it's Omicron or not directly. But we know that in South Africa, 4th wave is Omicron from numerous other sources. So this is thought as a brief introduction to what is happening in South Africa right now. So this is a very fresh video. It is less than 2 days old, I think, and it has had many views already, 1.3 million views. What I will do next, I just want to take you through a little bit more about the ongoing problems, and then quickly round up with a few suggestions from my side. They may not be taking you into the very fine details, but as a general idea in response to Pavanji's request as to what we should be doing for the future. How are we preparing for something? So what Dr. Campbell is saying is what is being seen in South Africa, because he has a direct contact with Steve Biko Hospital. John is a nurse, and he connects with a lot of people. He has a lot of students everywhere. I think he connects also with South Africa, and he sees the fresh data. And what he is saying are many things, that the acute cases that are coming in the hospital in people who are not admitted for COVID is very low. Now, it will be a few more days before we can understand how it progresses, and it will be a few more weeks before this thing comes to other parts of the world. If I just share a few slides to take you through what is in my mind, and then we will leave it there for everybody to comment on, and perhaps there'll be some time for discussion. So this was news from Pavanji. I hope you can see my screen. If you cannot see my screen, please stop me. Yes, we can see it. See the screen. Thank you so much. I'm just going to enlarge the screen so that it fits the whole thing. And sometimes when I do this, the slide does not progress. So if the slide does not progress, please stop me. This is the first slide. This was headlines 3 days ago on the BBC. And what is important here is
scientists have detected a surge in the number of people catching COVID, which is what Dr. Campbell is also saying. And people are getting reinfected, people who have had this problem. On the right-hand side, you can see the number of mutations that are understood. There are many databases now where we can see where these mutations are on the protein. There are 32 mutations known to date on the spike protein. I won't go into the specifics here, but there are databases where all this is documented now. On the news, on the same date, 3rd of December, we had news from the chief scientist at the WHO, Dr. Soumya Swaminathan, making a very important call that perhaps vaccines are having an effect. Very, very early days, but the biggest the biggest point she makes is that natural infection as a booster must be recognized. And we will not know where these variations are coming from. So it's a very safe statement. And she goes on to say, we may never know where these mutations are coming from. And that is a big problem. There is the flip side of the story, which is the message coming from the healthcare and pharmaceutical industry, who are saying the vaccination is the only way, we have to make new vaccines, etc., etc. So it's a very controversial kind of statement, but I can understand the industry has a different perspective on the problem, and public health people have a different perspective on the problem. And John Campbell, who's reporting directly with details from Steve Biko Hospital in South Africa, has a different perspective. So very early days, but that is where things are. And if you look at this story, this is from Asia Post on Friday, 3rd of December, this last Friday that went by, was this interesting headline saying Karnataka to investigate how South African traveler with Omicron variant left India. So there are some, all kinds of things happening there in terms of the headlines. If we were to look beyond the headlines, this is what we have from the National Institute for Communicable Diseases in South Africa. The website, the link is at the bottom. You can access that, and it gives you information about cases for the different regions of South Africa. The power of informatics is seen even more clearly in this graphic here. Shown in red is the province of Gauteng, which is where Pretoria is and which is where the maximum number of cases, their cases are increasing. We'll have to wait for a few more days to see where this reaches. As days pass, we will see it. Now, we have seen John Campbell's story about the Omicron variant. Now, what is important here is the number of people who are following John's website. Please do visit. We've seen that, and that is the Steve Biko Hospital. Please do visit John's YouTube channel and see the kind of information that he's been gathering and how easily he promotes simple ideas. So we've just seen the first few minutes of that video, and the information from Gauteng province and the Steve Biko Hospital is what we have been all following till now. Wash your hands, etc., etc. Be careful with preventive measures. As I said, this is one example of the database where you can find information about the variants, the mutations. It's called the GIS-AID database, and it was set up some time back for studying influenza, and now it's following COVID. You can see the spike protein. This is an X-ray crystallography structure, X-ray structure of the spike protein, and color-coded all the mutations here on the surface of the protein. You can see in orange, blue, or green with different color coding for the mutations. Again, don't have to go into the details right now. They also provide a origin tree of this mutation. And there is another database, the Johns Hopkins database, which also keeps information about the sequence of genomes. You can spend many hours looking at this and many hours playing at this. The most critical thing here is on this slide, and this is the bit I want to emphasize, which is that we are seeing a big shift in how the world is interacting with each other. Look at this. I'm seated here in England. You are hosting this program out of Calcutta, and listeners are in different parts of the world. People are joining us from Mumbai, perhaps from Lucknow, other locations, Assam. Vishnuji is in Assam. So
this is the speed at which we are going to, the new world is going to look like this. And the label we are giving it is the 5th industrial revolution and the 4th globalization. And the beginnings of the 4th globalization we are seeing in a rather unwanted virus that is going around. A lot of travel between lands, etc. People are traveling far very quickly. They're taking things with them, like in that story from Karnataka. People come into the country, people leave the country. We don't know what they bring in, what they take away, etc., etc. So we have to learn to live with this. And that is another important message of the story. Some countries are preparing for that next step. How do you live with this? And the example, which is very important for us to follow, is our neighboring country, Singapore. Not quite neighboring, but somewhere very within a few hours flight. Singapore's healthcare system, their features, challenges, and shifts was published in September in the Lancet. The key point here, the 3 beyonds for future health and care. Beyond healthcare to health, very important message here. From hospital to community, and beyond quality to value. Now, when Singapore talks about this, I think we can all take note of it, because it's a very special island nation with a lot of people, and they have to be very careful about their health for the citizens. This is why we need to be careful. You know, listed here, high consequence infectious diseases, either contact HCIDs or airborne HCIDs. On the bottom of this table on the left-hand side is SARS. In India, we see, Kerala sees a lot of Nipah virus, perhaps even Bengal, Assam might have few cases of this. But the R values may be very low, and some people may have some form of resistance to it. But you can see this big list here. We've had avian influenza. This is still a problem. There are many parts of the world experiencing some of this avian influenza right now. What molecular genetics does, and what Pavanji wanted me to highlight a little bit, is how we can compare very swiftly. We can do DNA sequencing, RNA sequencing of these viruses, and then compare different viruses. And when we do this, this is where we see the real surprises. You can see these new mutations, but the starter of this whole problem is this virus, this sequence here, you know, the SARS-CoV-2. I hope it's clear, the red label. And within that alignment, we call this a sequence alignment. In this case, protein sequence alignment. You can see isolates of viruses from different parts of the world or different animals, and you can see how they are all very similar, except the SARS-CoV-2, which has 4 extra amino acids. These kind of mutations are very unlikely in nature. And this tells us, it's an alarm bell for us to be careful about thinking on the origins of these viruses. We don't know. It's unusual to see such mutations in nature. And so, you know, we worry about these things. We know that there are many lands, many countries where they work on viruses. We know also that nations have bioweapons programs, and I leave it there. I don't want to go further into this. But what happens is when a virus like this comes out to new lands, this is what happens. This was the first wave. That estimate here of 23 million is an underestimate, more likely double that number. And the second wave, we were hit with the second wave, we lost a lot of lives. And this is what happens when viruses come. What is the importance here is, are we going to be reactive or proactive about health? And I think Pavanji, by calling us all together today here, is telling us we have to be proactive about Omicron. And in terms of the poor man, immuno-health for the poor, this is so important. We have to find other ways to look at immunity, immune health. And this is echoed in that BBC News item saying boosting the immune system should compensate for some of the variants' immune evading tricks. Now, this is early news. It's very, very early, 3 days old. These comments are being made, and what John Campbell is giving us is a different description of what is happening there. Very few acute cases. Again, we don't know if this will be the same for every other part of the world. I presented this slide here just to point out the reason why we have to be careful, because
you can do this analysis for any state of India, you will come out with almost similar kind of a picture. This is Madhya Pradesh here, shown in red, and a population of about 73 million people. If you compare it to Canada, this is about 2.5 times the population, 2 times the population of Canada. And if you look at the land area, Madhya Pradesh is only about just a little, marginally over 3% the land area of Canada. You can see the pressure on lands. And on top of it, we don't have the resources. So we need to find another way to engage with this. And my comment at that point was that health, we have forgotten all about health. We need to start reviving that literacy, health literacy and literacy of the body, and understanding, the common understanding about these viruses must increase within the community so that we can enable health impact at scale, so that it touches large numbers of our villages. Madhya Pradesh has about 55,000 villages. Uttar Pradesh has about 97,000 villages, or 99,000 villages. These are big numbers, and we don't have the resources. We have to think of other ways to, and the most important thing is education. And I will come to this at the very end of my presentation. Now, we have another opportunity here, which is to take Ayurveda and Ayush into global health dialogues, like what is happening in WHO, like what's happening in South Africa and other parts of the world. What is it that Ayush has that can start to go into these global dialogues to arrive at what I call another representation of health? Health has to be understood differently. It's wonderful to see that some of that thinking is already happening here in India. This is a small poster they have prepared about One Health, just to point out that health is different from healthcare, and health has to be understood in terms of the complex interactions: animal health, human health, environment health, plant health. Everything must become together. It must be considered together. Think continuity, think sustainability, and think borderless. And these messages are very important as examples to convey to the United Nations that India is already doing certain things. So my point about putting Ayush into the world, into global dialogues, is happening, but maybe we can do much more to meet certain challenges also within the Sustainable Development Goals. The connection that people have made since a long time, that to understand, to know the nature of man, you must know the nature of all things. And these are messages that have come out from all universities. Shown here is a message that was given initially by the 18th Regius Professor of Physics here between 1892 to 1925. And much later, almost a century later, by Sir Keith Peters. We keep echoing those things, but are we doing something about it? Are we able to convey strong messages? This is the big question. Now, the messages that we need to convey have been with us for many, many hundreds, perhaps 1,000 years, 1,500 years. And shown here is Nagarjuna's indicators of health, the Panchadasha Prakara of Nagarjuna. On the right-hand side, in those brown boxes, are in Sanskrit, the 15 indicators of good health. Now, on the middle column, I have shown the approximate translations there. All of those, every point in there is nothing but physiology. So, peaceful, tranquil mind, proper sleep, waking up in the morning without any discomfort, proper digestion, desire for food, etc., etc. These are all matters that impact good health, and there is some connection with the problem that we are seeing there. If you're not healthy, you're open to problems from reduced immunity, problem susceptibility to viruses, etc. Where are we going to go to understand this? Please. Sorry to interrupt. Your slide is not moving. Oh, where I wish you had told me this earlier. Where did it stop? Now it got moved. Okay, thank you for stopping. Now there is a change. Yeah, please stop me because sometimes I notice with with this package that it doesn't stop. I'll keep it like this. I won't enlarge it, but here it is. The School of Research in Ayurveda in Kerala,
connected with the Kerala University of Health Sciences. So there are things happening in the country, and we must become aware of all of these things. Globally, what are the things happening here? This is news from Edinburgh. This is a story that has been around for many, many months now, which is, does an ancient Indian remedy, they call it an Asian remedy here, help prevent the spread of COVID-19? And the example given here is very simple. They call it nasal irrigation. In yoga and Ayurveda, this becomes neti. Neti for preventing the condition. And if this is true, how does it work? And what is the connection that is to be made? What is the biology that's made? And this is from the Medical University in Graz in Austria. They talk about the microbiome, and they talk about the nose-brain axis. And these are the researchers there. And when we look at the aspects of their research, they talk about how the microbiome, the bacteria and the viruses that are there in our nose, how it affects many aspects of the physiology. And the mechanism for this action is shown in this cartoon here. Shown in the green box is the respiratory mucosa, and shown in blue, the spots are the microbiota. And there is an a structure here called the nasopharynx-associated lymphoid tissue system. Now, I've put these slides together just to point you to a practice that is known in Ayurveda, that is being recommended by Ministry of Ayush. I'll come to those slides as I go on. But the point I want to convey is that we are not making those, we are not bringing the two languages together. If I go to the next slide, you will see the connection that is being made by researchers in Italy at the University of Perugia, Department of Otolaryngology and Medicine and Surgery. They are telling us that if you have the right kind of microbes in your within your nose and that part of your anatomy, it gives you protection against COVID. And more recently, there are a lot of studies showing that, in fact, people who have COVID, when you look at the microbes, there is a big imbalance. There's some kind of a dysbiosis in that part of the of our anatomy. And some people are saying the link is because of air pollution. There are particles that go there. Anyway, the researchers are pointing us to the biochemistry happening in there. There is a big crosstalk between the bacteria and the biochemistry of the bacteria and the cells of the immune system, and the cells of the epithelium and onto the local immune system. Now, there is a lot of such basic research that is coming through, and the connection that can be made is with this image here. For me, it's just one of the many thylums that is used in Nasya, Anuthylam, described in Ashtanga, and about 31 different herbs are here. The question is, how does it work? Is there a connection here? Can this be refined, or can it be used just like this? Do we need all these herbs? Can you reduce the number of herbs, etc., etc.? So these are key questions that is there to be answered for the future. Another big problem that we still haven't understood completely and is being recognized as a big problem in every part of the world where COVID has had its effects, is this thing called long COVID. People who suffer from symptoms much after they have been out of the main disease. The National Center for Complementary Integrative Health Director's page conveys this problem about what is there in America. The numbers are vast. Millions of people are suffering from this condition. And there is a suggestion that some protocols from Ayurveda's Jwara Chikitsa, together with certain forms of Langana and certain procedures in Ayurveda, will give you excellent results in this. So that is an area where a lot of work can be done. And there is also a possibility of connecting this with some of the marma aspects that is understood in both Ayurveda and also some aspects of yoga. One marma in particular, this we are discussing with several people. This is one marma we think which might be connected very closely with the pituitary and the hypothalamus and onward to other parts of pathology in the body. The connection between the microbes and good health is
very, very topical. And I think the point that is given to us by the researchers from Italy and Austria is that the nasal microbiome has an equally large impact, very much like the intestinal microbiome has impact. There is another big area of work here for Ayurveda. We know that food, diet has a big effect on the immune system, and Ayurveda recognizes it as Jataragni. Now, what is the connection between Jataragni and the modern descriptions? Again, piece of research that waits to be done. Very, very recent presentation here at the European Congress for Integrative Medicine last month, the gut microbiota and immunity. There is a lot of evidence that people who present themselves to acute care in hospitals, they have a major dysbiosis in the gut. And this is the aspects of the gut is true for Ayurveda, Unani, Siddha medicine, the understanding of gut and good health. So there is something there that needs to be understood. Recent, again, at that 13th European Congress for Integrative Medicine was a presentation about piperlongumine, which is, and the mechanism in which it acts. So the connection being made with piperlongumine. Piperlongum, we know, is a part of Trikatu. It goes into many, many formulations. The researchers are showing, Yvonne Samstag, professor in Heidelberg, is showing the connection between the immune cells and piperlongumine. Now, piperlongumine, I put one example here, Mahatikta Gridam, and you can see piperlongumine is one of the important ingredients here. So are many other things, but piperlongumine, at least we have some indication there is a role. I come to a few early recommendations that came to us from CCRAS very early in the first wave, and they talk about giloy, tulsi, amla, asparagus, but those recommendations are not coming out into the language that modern biology wants to see. You know. We use a term called Vyadik Shamatva. Now, how can we make this a little more exciting to put it in a global dialogue? It's a big gap that is there, you know, and maybe this is one thing that we need to revisit. We need to go back to ask questions on how to make this into an international language without compromising what Ayurveda and Ayush systems offer. I highlight one other point about the link between some of the recommendations in the CCRAS listing and something that comes from Unani medicine. And if you look at the CCR recommendation for dry cough and sore throat, it says pudina, ajwain on a daily basis. Okay, it is a pointer. It is not. It is lacking in many details. Suppose somebody in Sweden looks at this, they will not understand what to do with it. They don't know what do you do with this pudina? What do you do with ajwain? They don't know what to do with it. And there is a gap here. And maybe this is something we should discuss with people at CCRAS to see how to refine that language. The point I want to make here is about the connection between what is there in Ayurveda and what is there in Unani. So the important formulation, I've talked about this before, Arkeazib. I think Rahmanji will tell us a little more about this. Arkeazib has extracts from pudina, ajwain, and kafoor. This is a very, very important kind of connection between different systems of the Ayush modality. And we also have Siddha formulations that describe something similar, although it talks about Kalamay and related formulations. Now, where do we go in terms of the bigger Modiji talking at the Silver Jubilee celebrations of Rajiv Gandhi University of Sciences? And he says, you know, we have many of these universities of health sciences. Today is the 12th founding day of the 12th anniversary of the Kerala University of Health Sciences. The same is true for them also. We have such amazing resources in every one of our schools. Karnataka has 54 medical colleges, 39 dental colleges, 43 Ayurveda colleges, 5 Unani colleges, yoga colleges, pharmacy colleges, nursing colleges. But somehow we are not able to turn this around into that machine that we need to see. I presented this in at the Silver Jubilees, the celebrations of Rajiv Gandhi University Health Sciences. Within that collection are
messages for where the rest of the world wants the answers. And this is the future: cardiovascular disease prevention, just like we are trying to prevent COVID problems in personalized, predictive, preventive, participatory, precision medicine. This is what the world wants to see. Now, I've put this scheme here just to show you where we need to be exerting our energy. If you take two systems of medicine here, two systems of whatever, with some incompleteness shown as with an X and completeness shown, and good understanding shown with a tick, and you juxtapose that to another system of medicine also with difficulties, or where there is good understanding, there are many areas that are where there is no conflict, whether it's Unani medicine or Ayurvedic medicine, whether it's Unani or Siddha, or whether it's Siddha and modern medicine, and any combination. There are many areas where there is no conflict. Hygiene, for instance, is a conflict. Siddha talks very clearly about the Zaruriya, and where hygiene becomes a very, very important part of this whole thing, which is what we are hearing now. Wash your hands, put your mask on, etc., etc. There are some domains where we might have clarity in one domain, but not in the other, and that is a good area for basic research. And there is one area where both sides are unaware. Right? In this area where there is clarity on one, not the other, one of this might be the microbiome, for instance. The one area where there is fundamentally little information or little clarity would be something like Marma Chikitsa. And I've highlighted that section here. So there is an opportunity for a lot of work. And when we look at where the rest of the world is, this is what we have from the European Parliament. That it's the website, it's all of this information is available at the website. Everybody is looking for new drugs and delivery methods. And can it revolutionize medicine? Can it find new treatments for Alzheimer's, Parkinson's, HIV, COVID-19, etc., etc.? Now, this is coming from the European Parliament, who are not even aware of Nasya as a modality. And I'm saying, if we can do a little bit of research saying 6 drops of this oil, whatever plant herbs it might have, the evidence points to microbial changes in the nasal microbiome, and that gives you some resistance. That itself is a revolution in medicine. So I leave it there. This was one of my presentations with our Canada-India Foundation on Saturday. My ideas about where we need, you wanted to know what are the policy changes, what is the discussion, how to prepare for the future. And I think I've given you maybe 1 or 2 ideas. And what I would like to see, for instance, is a more vibrant interaction between Lucknow and Uttarakhand, for instance, or say Punjab and Lucknow, somewhere that we must start to map these things between Madhya Pradesh, between Bhopal and Punjab, or Bhopal and Jamnagar. You know how to make these connections. But let us bring about that vibrancy in this dialogue. The direction is clear. We have to be global leaders using Ayush as a modality. It must come within that narrative, but how to make it, get it out there. So I leave it there. Thank you. Excellent, sir. Excellent, inspiring, very inspiring and mesmerizing. मतलब मैं समय समझ ही नहीं पाया कि समय कहाँ चला गया. Excellent, excellent, sir. So now I would like to request Dr. Vishnu Prasad Sharma ji from Assam, Guwahati. Dr. Vishnu Prasad Sharma ji, am I audible to you, sir? Dr. Vishnu Prasad Sharma ji, am I audible to you, sir? I hope he is in the way. So now I would like to request Professor V.K. Agnihotri, sir. He is former professor of Department of Swasthya, professor and head, Uttarakhand Ayurveda University, to bless us. I would like to welcome first Dr. P.K. Prajapati, Dr. Ramdas. Also, welcome Dr. Prajapati ji. So I would like to request Professor V.K. Agnihotri, sir, from Ayurveda, from Uttarakhand Ayurveda University, Haridwar. Welcome, sir. Thank you, Brahma sir.
Very good evening to all of our respected guests and dignitaries. Our regards to Professor Madan Thangavelu, Professor V.P. Sharma sir, Dr. Swagat sir, Professor Younis Munshi ji, and Professor Jeyaprakash ji, and all the big dignitaries. It's my pleasure to be a part of today's speakers list. Though whenever Professor Madan sir speaks, he never leaves anything to be spoken after him. It's my greatest achievement, not only a pleasure. We all know that we are all at the same place, whether we are residing in India or states or anywhere. Things are developing very fast, and we are just getting affected or benefited with the informations. And now the situation is wait and watch. Resultantly, this platform, which is having a discipline or protocol to celebrate each and every World Day, broken the chain or the discipline. Neither it is a World Corona Day, nor it is World Omicron Day, but Dr. Pawan Sharma is sensitive enough to put forward this topic for today's webinar. This is what we can say, Sarvabhut Hite Rataha, Vasudhaiva Kutumbakam. This is how we are sincere and careful that whatever is happening, or any human being, and you, sir, included the vegetables and animals also, how can we procure the life of the earth by all these development microbes and all that? There is a confusion. Persons are speaking as Omicron, and one word I heard just today evening is Omicron. Omicron, they are just associated in that way. So Micron is there, but as far as this situation is concerned, as we were asked earlier, that we clinicians are supposed to put forward to combat with this concept instead of going through its development, its mutation involving the DNAs, proteins, its physiology, its anatomy, its means development and all that, which is filtered by now. It is infective enough or in comparison to the Delta mutation, but at the same time, it is not so dangerous. And as far as the other international authorities were talking, that it may lead to even 2022. Madam was speaking yesterday itself. So involved with some of our vaccines also. So we should be careful, and we have to maintain the same protocol which we were maintaining for last 20 months, or it can be more means emphatically accepted. Sir told one thing. I got a little bit difference, that regarding the ajwain and long or just methi seed, we are failing to convey the better language for the modern scientist. The things are there. What I feel, it's not a reaction. What I feel is that Ayurveda was there before CCRAS or CCIM and other bodies which are responsible in promoting our this system along with Ayush at world level. So to put any good language will not increase any of the quality of efficacy of any of the drug which was there and which is now and which will remain. As far as our health are concerned, our if at all, if it is needed, as far as the evidence is concerned, it's very difficult to get that we are touching the lotus feet of our parents and other gurus, how it is going to affect and how much we are benefited. It's very difficult to make any parameter and to see that what was my intelligentsia level before touching feet for one day or for 1 year, and then what record. And it happening, everybody knows. Our kitchen is embedded with the turmeric seeds and every condiments. They are all effective. They are making all good activities for the digestion of the food stuff we are preparing and we are getting inside. So things are there. It's very good if the efforts are made and their efficacy is being
made at par to the understandable language of the world scientist. Okay, now the part belonging to its clinical manifestation and any of the possible remedies. Though it is, I should say, on one hand it is hypothetical, but on other hand it is effective. This we have to accept only because we have passed 20 months. Things can be escalated or evaluated with the patients of All India Institutes of Ayurveda, Delhi, and Chaudhary Prakash Institute, Delhi itself. So, considering that it is giving some effect like flu, it is not directly affecting this time the Omicron to the nasal passage or the throat. So, simple consideration of the flu symptoms or influenza symptom, which may be associated, may not be nasal running along with the fever, the general body ache with coughing, harshness or some irritation in the throat, but coughing, wet means productive or non-productive. We can use our Ayurvedic medicines, as I am belong to Ayurveda, freely without any danger or difficulty or complications or after effects. For example, very simply considered as a Tripathi Ras. Of course, we are talking about the 12 plus age patients. Tripathi Ras, Godanti Bhasma, Tankal Bhasma, Shrang Bhasma, Mrit Singh was is now prohibited. So Shrang Bhasma, Abrak Bhasma, along with Paval Bhasma or Paval Pesti, with Son Garrick and Talishadi or Sitopladi Chun. This one combination, along with ginger, lukewarm ginger juice, and then putting the adequate quantity of honey. This itself, this preparation for 3 times a day, after breakfast, after lunch, and after dinner, will be of great value. After taking this medicine, 20 ml to 50 ml of simple lukewarm water or any decoction made up of tulsi leaves, this giloy, or mulesti, not kali mirch and people. No, that is irritating. Simple tulsi, basil, and our this giloy. These two things will be very soothing. And for example, as we have used earlier, anutel or simple desi ghee or mustard oil, these are of great value. We can use in a form of nas, means using the index finger, 2 parts dip in the oil, inserting up to the depth where we can, and make a rotation clockwise and anti-clockwise. We are supposed to lubricate gently over the septum side and the nostril side through both nostrils. It will be effective. Simple saline, or if the harshness is there, desi ghee saline gargles, continuously 12 gargles will affect a lot. It will give the soothing effect. Chewing, you can use camphor along with the mishri. It will affect along with a small piece of the madhuvasti. These are a few things. And as far as the decoctions are told, we talked about earlier, those who are time tested for last 20 months can very easily be used, and it will be effective. And the rest of the protocol and the advisories which are issued earlier, like sanitation, keeping the hands clean so many times, keeping distance, using the mask, these all things are now become a part of life, basic things, and they are to be used, and we should be careful. As in India, it is the winter season, so very naturally the Vat/Vikar used to take place. If at all it is not SARS, it is not COVID, or it is not simple, after Deepavali and near to Holi. So these are the change season as far as our seasonal regime, the Ritucharya. It has been well discussed that at this time it is also having, it has passed that Ritu Sandhi and Yamdasta. These are times were there. We, a simple healthy person, we fall. So these are the area where we can be careful. And you used the very important word, that still proactive action will be of great value.
may it be any invasion of any of the microbe. Proactive means we are aware, we know how to protect ourselves. So our doctors, we doctors are responsible for conveying this message with the awareness that since the mutation is going on, changing in the form, changing in the name, it became Delta and now it became Omicron. Things are to be observed in the same manner because we have to save the humanity. I think the small suggestion and submission will go a long way if we simply use this much thing and save our lives and the lives those who are getting suffered. We wish all valuable prayers to all sufferers that may God bless him a very good health. Thank you so much. Thank you, Dr. Pawan Sharma sir. Thank you, sir. Thank you, Agnihotri, sir. Excellent Ayurvedic perspective. Thank you. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Vishnu Prasad Sharma ji is disconnected. Now we have our Swagat right from the beginning, Dr. Swagat. I would like to request all the speakers. Then I will go to Ziaur Rahman ji for Unani. So I would like to request Dr. Swagat for his opinion on Omicron and remedy. I welcome Dr. A.K. Dwivedi from homeopathy, Dr. Nishant Tripathi. After Unani, we will have blessings from homeopathy, Dr. Nishant Tripathi. So all knowledge will be showered to us. Dr. Swagat, please. Am I audible to you? Hello. Yes. Yes, sir. So, hello, a warm welcome to all. And it was a wonderful speech by Madan sir. As extremely, what I can say, मैं अपना knowledge बहुत बढ़ा चुका हूँ. And one more request, Madan Thangavelu sir, if you can share your PowerPoint and if you can go read again, if permissible. Sir, you did not unmute. Yes. Namaskar. Thank you. I am happy to. I will. If you put your email here, or I can send it to Pavanji, whichever way is convenient. I can send it. दोनों. Sure. स्वागत जी, अगर आप थोड़ा email डाल दें आपके इसके बाद, फिर आप. जरूर सर मैं डाल दूंगा. नहीं तो पवन जी को भेज दें. Yes, sir. So, just I would like to start my thing. Our Agnihotri sir was telling it was the concept, and even before that concept word, I would just need to say to understand the treatment part, we need some basics. So many basics have been told by sir. So I would like to just show you some things what best we can understand. I could just put out here. If you can see here, yes. So the thing what exactly went was initially there was many versions, alpha, beta, gamma, delta. Now this is everyone is spelling it as Omicron. It is exactly Omicron. And why the word O came? It is again C was for China. It should not be put. Harry for India. It should not be put. And finally, any country would not get affected, so they put it O. And so it is the Omicron. And the version is B1.1.529. So what exactly is next thing we can see? The main thing is this. Sir was showing this spike. So these spikes, they get invaded to the body, and once the body is not able to make out things, this virus is not going to make out, they get muted. Means they just make some changes in themselves, and I'll not go in detail with that. And this is how there are new variations. You can see over here the color change is there, and these are the new variants. And I'll not go in detail of that also. What exactly happened is the other versions, they had, you can see a delta, which is the most deadly and dangerous. They had only about 8 variants, whereas this Omicron, it has got more than 32 variants. And now there are two things what we need to understand here. These things are questions. Now, is it more transmissible?
Yes, it is more transferable because now we have already seen from the present data that it multiplies double every day. So the earlier word, if it is Delta version was the most effective. Even till today, 90% of the cases are Delta versions. But still, this is going to be more. Or are we starting with the third wave? Still a question mark. Now, is it more severe? To now, what sir was telling earlier, there is a good news also. Till today, we don't have any such severity or not even a single death case is being detected. Next is, can it be detected to PCR? Yes, it can be detected to RT-PCR. Now, next question is, can vaccine prevent it? To my knowledge, till date, no, because those who have already got double doses, they are also being infected. So this is what has been the present data what we get. Now, next is, there are two varieties, variant of concern and variant of interest. Though variant of interest are only two in variety, this is put by WHO under the category of variant of concern. So this variant of concern, we have not much of this. Now I'll straight away jump on to what are the main symptoms what we have. The symptoms what we have is main is tiredness. Not much of the other thing, main is the tiredness. Next is what exactly what we see, lethargy, tiredness, and itching in the throat. This is. So if we go through different classics of Ayurveda texts, it clearly indicates that this is an Sannipata Jara, and it has got its own things, different variations of Sannipata Jara. And if you see the Sannipata Jara Lakshana, the basic version of the Sannipata Jara is very clear with us, and it has got its own versions where it can see that there is Lakshanas which will not read out, and among them, if we search in the Bhava Prakasha, I usually refer for these kind of diseases, I refer Bhava Prakasha. There is one variety, a variant which is called as Chandrika Sannipata Jara, whereas Chandra is the main symptom. Chandra refers to the Alpa Nidrata or Chandra phase or the drowsy phase. He cannot sleep, but he will be drowsy. That is the main symptom of the Chandrika Sannipata Jara, wherein he gets more thirsty and his body will be more rise in temperature will be there. He will have a mild swelling in the throat, and that is what is said is Sa Ardrasya Kanduhu Kapha. In the what it says is Santaptara Arthir Kanur Galehe Twayatur Tarda Kandu. In the Gala, that is throat, there is Kandu. And it is one of the symptoms in this Omicron. So we cannot exactly say that all the symptoms, and if all the symptoms are present, then the Ayurveda says it is the very severe condition. There are many symptoms which are present in this Chandrika Sannipata Jara. It is present. So I personally feel it is a Sannipata Jara of the variety of the Chandrika version. So now after this, how to come back? In Ayurveda, it's very clear how we have to treat the condition of the Sannipata Jara. It says that first Langana is done. Langana doesn't only refers to Upvasa. We all know that there are many Dasavidha Langana. Even among them, depending upon the person and capacity, we have to do it. Next is the Valuka Sveda is been explained. After Valuka Sveda, I would just like to say Nasya and Nityavana, which is very most important, as Sir was telling that nasopharyngeal NAT was the one thing what Sir was telling. That is Nasya. Nasya, what is how Nasya is done? Nasya is done with Mahalunga Swarasa and Ushna Nilavana. Nilavana is been explained. That is Budavana, Savarchalavana, and Chendarvana. Nilavana should be used. That is simple sign motor what is being said. But here in Ayurveda, it is clearly said that Nilavana with Mahalunga Swarasa, you have to do the and once it is installed, all the placement is present, it is being later will do this and it is coming out. This is what has been explained to Ayurveda. Next is what is being said is one more स्वागत जी का आवाज थोड़ा कट स्वागत जी आपका आवाज one second. Now it's okay, sir. Much better, but you gave us some very important points कि वो भाव प्रकाश से आपने कुछ बताया, which is very important. Yes, sir. Now Much better. Thank you.
Yes, sir. So after Nishtivana, I was telling Nishtivana, it was clear? Yes, we can hear you. Yes, sir. In Nishtivana Chikitsa, it is being said that Ardhaka Swarasa along with Saindavalavana and Trikat. Yes. This has to be mixed, and Nishtivana Chikitsa, once you put this in the mouth and you make the gargling, then there is the kapha vilena will be there and you can spit it out. Yes. Just like what we say is the oil pulling. I'll just divert from the topic. Why this oil pulling? What with oil pulls nothing. But yes, oil pulls something. That is the microbes present in the oral mucosa. The microbes which are present in the oral mucosa, they are pulled through this oil pulling. That is the reason it was given oil pulling. The same way, once you keep these things, Ardhrakaswarasas, Entavalona, and Trikatu, they pulls all these bacteria, the microbes, viruses which are present over there, and they are taken out. That is the reason Ayurveda has given more importance to Nishtivana Chikitsa. So, in order this is being given. Why in order this is being given? We have to follow only one after the other. Once the Nasya is done, then the Nishtivana Chikitsa, that is in, if it is present in the nasopharynx, then the Nasya Chikitsa. In the throat, it is the Nishtivana Chikitsa. And after the Nishtivana Chikitsa is done, what we have to follow is the Avalehana. This is very clearly Avaleha. Avaleha doesn't refer to giving Chavanpras or any kind of this thing. Avaleha refers to what we think there are certain drugs which has been explained, and that has to be mixed through honey and they have to be licked through the patient. That is how certain drugs which has been explained. And I will not go through detail of that. One of the main drugs which has been explained is the Pushkaramula and the Katphala. You can also use Chaturbhadra. Chaturbhadra is the variants of the drugs which has been explained. Among them, Chaturbhadra, what has been, we all know Chaturbhadra, what is Chaturbhadra. Next is what I would like to say is the, Sir was telling regarding the, how we can combat it through the food. So what I would like to say in the food variety, it has been studied that it is called as ORAC value. What is ORAC value? I'll just tell you. ORAC refers to the word is oxygen reduction. I'll just come there. Oxygen radical absorption capacity. This is called as ORAC unit. And if we study what is the ORAC unit coming out of the free radical theory and antioxidant theory, Sir was telling about the pudina. Peppermint, fresh peppermint leaves that has got the 13,978 ORAC value. And the best ORAC value which has been given in all the, you see that it is the spices, clove. And I have in Western countries, many people, they treat certain dishes with clove oil. Clove has got 3,14,446 ORAC value. B class or C class ऊपर के हिसाब से उड़ान हो गए Sorry? इन सब में से जो Sorry, anything problem? Okay. So next is the acai berry. We are not only in US, it is the one fruit what we get. Kindly be short within 10 minutes. I would like to request all the speakers as Finishing, speakers. sir. Finishing. Please. I'm finishing, sir. Acai berry is another drug which is best used. Even our turmeric has got 1,59,000. Next is what I would like to say is the Acharya Rasayana. I'll not continue with that, but Acharya Rasayana has got the neuroimmunological benefit regarding that. That any other day we can discuss regarding that. Neuroimmunological system, it has got pituitary gland, and there is a big topic to discuss. And next thing is we have to go with your yoga, pranayama. Pranayama, especially Omkara and Nadanusandana, that is Akara, Ukara, and Makara. They have got very good results, and we are teaching public here to practice this in every day. And next is the Acharasana, maintain distance and maintain healthy life, get vaccinated. This is what I would like to conclude with this. Thank you, Madan sir, and thank you, Pawan sir, for giving me an opportunity to hear and put forth my words also. Thank you. Thanks a lot. Excellent. Excellent. Very nice, Dr. Swagat. So I am moving now to Unani because
for Ayush, Unani is also important content and a part, integral part of the Ayush. So I would like to request Dr. Ziaur Rahman, and then I would like to request PK Prajapati ji, please don't go after Ziaur Rahman ji. I would like to request Prajapati ji from All India Institute, and then Dr. Nishant Tripathi ji from Becksons Homeopathy. So please, Dr. Ziaur Rahman from Allahabad, welcome. Thank you, Dr. Pawan Kumar Sharma, sir. Very good evening to all the dignitaries that are present in this webinar, such as the Dr. Professor Madan, sir, Dr. Swagar, sir, Dr. Venkat Swami, sir, and Dr. V.K. Agnihotri, sir, and Dr. Nishant Tripathi, and Dr. A.K. Dwivedi, sir. सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये बताऊंगा कि ये जो कोरोना है इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि फर्स्टली इट वाज रिपोर्टेड इन द साउथ अफ्रीका ऑन द 24 नवंबर। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ये पहली बार रिपोर्ट किया गया और 26 नवंबर को WHO ने इसका नाम जो है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न दिया, यानी ये खतरे की घंटी। और ये वायरस जो है बहुत ही हाईली ट्रांसमिसिबल है। तो जिस वायरस के बारे में ये कहा जाता है कि जो हाईली ट्रांसमिसिबल होता है वो लेस डेडली होता है, तो इसी वजह से इस वायरस से घबराने की और इस वायरस से डरने की कतई जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं आमतौर से इसके सिम्टम्स जस्ट लाइक कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसी तरीके के सिम्टम्स है इसमें भी पैदा होते हैं, जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, एक्सट्रीमली माइल्जिया इसमें होता है, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं और फटीग होती है। ये सारी चीजें कोरोना में भी पाई जाती हैं और इसमें भी ओमिक्रॉन में भी पाई जाती हैं। तो लेकिन बड़ी अच्छी बात ये है ओमिक्रॉन के सिलसिले में कि अब तक जितने केसेस इसके ओमिक्रॉन के रिपोर्टेड हुए हैं किसी में भी जो है कि निमोनिया नहीं डेवलप हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है इस वायरस की। तो इसी वजह से इससे डरने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। बस हमें ये चाहिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन हो जो उनको जो है कि उनका इलाज किया जाए और जो भी सस्पेक्टेड केसेस हों और जो भी हाई रिस्क केसेस हों उनकी स्क्रीनिंग की जाए। और इसकी स्क्रीनिंग आमतौर से हम इस तरीके से करते हैं कि इसमें जो टेस्ट कराते हैं RT-PCR कराते हैं। RT-PCR कराने के बाद इसका मतलब ये कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो फिर उसकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से ये बात सामने आती है कि ये ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड है। तो इस तरीके से अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसको हम यूनानी जोशादा यूनानी डिकॉक्शन इस्तेमाल कराते हैं। तो यूनानी काढ़े में जैसे बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि खत्मी है, खुबाजी है और इसके अलावा जो है कि बहीदाना है, उन्नाब है, सपिस्ता है और अलसी है। इन सबको जोशादे की फार्म में इस्तेमाल कराते हैं। और उसके अलावा जो है कि हम स्टीम इनहेलेशन कराते हैं, जैसा कि प्रोफेसर मदन सर ने बताया कि स्टीम इनहेलेशन कराते हैं हम अर्के अजीब से। अर्के अजीब में सत्य पुदीना होता है, मेंथॉल या सत्य अजवाइन, और इसके अलावा सत्य अजवाइन होता है, थाइमोल जिसको हम कहते हैं, सत्य काफूर होता है, कैम्फर होता है। तो इन दवाओं से हम जब उसको स्टीम इनहेलेशन कराते हैं तो क्या होता है, जो नाक में हमारे या जो गले में जो वायरसेस मौजूद होते हैं तो फर्दरली इन्वाइड नहीं कर पाते लंग्स में, वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। क्योंकि काफूर में और पुदीना में और अजवाइन में एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि बैक्टीरिया को मजीद बढ़ने से और मजीद आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो स्टीम इनहेलेशन कराते हैं। और इसके अलावा हम इसमें इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि जो बच्चे हैं वो इन्फेक्ट ना होने पाए, जिसको हमारे यहाँ तदाबीर अतफाल कहते हैं, चिल्ड्रेन केयर्स कहते हैं। तदाबीर अतफाल में क्या करते हैं, अभी मैं एल्डिवियर का एक पेपर पढ़ रहा था तो उसमें जो है कि एक नुस्खा तरतीब दिया हुआ था और एक रिसर्च स्टडी हुई थी। तो जिसमें रिसर्च स्टडी में ये देखा गया था कि एक नुस्खा इस्तेमाल कराया गया था बच्चों, उन बच्चों पे जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है, जिनको बार बार निमोनिया हो जाता है। तो वो नुस्खा ये था कि उस नुस्खे में जाफरान 1 ग्राम लेते हैं,
जिसको जो है कि 25 ml अर्क के गुलाब उसमें खूब अच्छे से खरल कर लेते हैं, और खरल करने के बाद जो है 100 ml शहद लेकर उसमें मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद एक शीशी में रख लेते हैं, और फिर उसको बच्चे को जो है कि दिन में 3 से 4 बार चटाते हैं। तो ये जो स्टडी की गई, तो इस स्टडी में ये पाया गया कि 2 से 3 महीने के मुसलसल इस्तेमाल के बाद जो है उस बच्चे की इम्यूनिटी पावर बहुत ही मजबूत हुआ, और उसके अंदर जो बार बार फ्रीक्वेंसी थी निमोनिया डेवलप होने की, वो फ्रीक्वेंसी और रिकरेंसी जो है कि काफी हद तक कम हुई। तो इस तरीके से ये नुस्खा भी हम बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि हम तदाबीर अतफाल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है कि हमारे जो जीरियाट्रिक केयर है, जिसको कि हम तदाबीर मशाइख कहते हैं, तो हमें उनका जो है कि जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनका जो है कि खास ख्याल रखना है। तो इसके लिए अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में, बेंगलोर में। तो वहाँ पे इवन की जो है कि ये देखा गया था कि कोरोना से इन्फेक्टेड जो पर्सन है उनको जो आईसीयू शिफ्टेड पर्सन है उनको जो है कि खाने में अगर हम दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर उबाल कर देते हैं, तो उससे उनका ऑक्सीजन लेवल और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी अच्छा खासा बढ़ा। तो ये स्टडी में पाया गया। तो हम जो हमारे बूढ़े हैं, जो हमारे ओल्ड एज पर्सन है, तो उनको हम दूध में अगर ज़ाफ़रान मिलाकर इस दौरान दें, तो अच्छा खासा जो है कि उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, और वो इस बीमारी से किसी हद तक महफूज रख सकते हैं। बल्कि अरबी में हमारी एक बुक है, तो उस बुक में एक कोटेशन है कि अल-कुरकुम युक़व्वी अत-तनफ़्फ़ुस, यानी जो कुरकुम या ज़ाफ़रान होता है वो आज़ाए तनफ़्फ़ुस यानी जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको तक़वियत देता है। चूँकि ये वायरस जो है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, तो इस वजह से जो है कि ज़ाफ़रान को अगर दूध में मिलाकर दिया जाए तो अच्छी खासी इम्यूनिटी मजबूत रहती है और इस बीमारी से बचा जा सकता है। उसके अलावा जो है कि जो इसकी प्रिवेंशन के तौर पे WHO ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसको कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि हम प्रॉपर तौर से जो है कि हाथों को सैनिटाइज करेंगे, और इसके अलावा कि मास्क, प्रॉपर मास्क का यूज ऑफ द प्रॉपर मास्क, और इसके अलावा जो है कि दिन में 2-3 बार स्टीम इनहेलेशन लेंगे सादे पानी से, और भीड़ भाड़ की जगहों पे जाने से एतराज करें, और बिला वजह घर से बाहर निकलने से एतराज करें। तो अगर इन सब चीजों को हम अपनाते हैं तो किसी हद तक हम ये जो नया वायरस है इसको हम किसी तरीके से कम्बैट कर सकते हैं, और इसको हम इसी तरीके से इसको हम डिफीट कर सकते हैं, और इस जो डेडली वायरल डिजीज है इससे हम बच सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर लिसनिंग मी सो पोलाइट सो you so much for Dr. Madan Kumar, Dr. Pawan Kumar Sharma ji, and for giving me opportunity to express my views on the Omicron concept to combat. Thank you so much. Thank you, Dr. Ziaur Rahman. Well in time. Thank you. Nice ideas. Just to inform everybody, we have Amrit Dhara. Amrit Dhara, just similar to that combination of Unani. Similar Dhara, Amrit Dhara is a combination of menthol, camphor and thymoc. When we mix these crystals into a bottle, that converts itself into a liquid. So that is called Amrit Dhara. And we were using also from centuries. So Amrit Dhara is really nice combination for this Omicron. I am confident. Now I'm changing to homeopathy. Dr. Nishant Tripathi, I would like to request Dr. Nishant Tripathi to present the aspect of homeopathy for he is marketing head of Bexan. He is homeopathic doctor. He is and his wife. So Dr. Nishant Tripathi. Am I audible to you? Dr. Nishant Tripathi ji. I have some technical glitches there. For homeopathy, I would like to request now Dr. A.K. Dwivedi from Indore. Dr. A.K. Dwivedi ji.
Yes, yes, Welcome, yes, welcome. you are audible. Yes. Welcome, welcome, doctor. Yes, just wait for few seconds. Welcome, welcome. Is there any problem, Dr. Dwivedi? Very nice discussion is going on. So every pathy expert is with us. This is a very unique event today on Omicron or Omicron. It is also a matter of confusion. I don't know what to pronounce, Omicron or Omicron. Sir, Madan sir, पवन जी, जब तक आपने द्विवेदी जी ये पूरा बीबीसी में आया है जी, ये आपकी जो सवाल कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होनी है, शायद आई विल पुट इट इन द चैट बॉक्स बीबीसी वालों की तरफ से, अमेरिका वाले कैसे करते हैं इसकी और इंग्लिश वाले क्या करते हैं और व्हाट इज द करेक्ट वे. Actually, what is the pronunciation, sir? I think the Greek is Omicron. Greek. So we must catch somebody from Greece, Pavan ji. एक पकड़ के लाए ग्रीस वाले, उनसे पूछें. Right, right. ये Dr. Dwivedi, please. Whether it is near to oh my god, OMG. नहीं, I enjoyed Ziaur ji's comment कि Ziaur ji आपने जो बताया जी इसकी इसमें the lung aspect जो आपने बताया कि tends less towards pneumonia, थकावट की तरफ जाती है और pneumonia की तरफ कम जाते हैं. आपके पास ये कहाँ से आया जी डेटा, ये सोच या डेटा शायद आपके WHO ने जो रिसेंट अच्छा डेटा पेश किया है उसमें उन्होंने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लंग की तरफ. अच्छा, दूसरी चीज यार जी आपने जो बताया कि ये फॉर्मुलेशन रोज और हनी की फॉर्मुलेशन एक बार और बताना जी. जी सर, तो इसमें जो फॉर्मुलेशन यूज करते हैं उन्नाब है, बहिदाना है और सपिस्ता है, खत्मी, खुबाजी और उसके और असलसूस और अड़ूसा, ये सारी दवाओं का जो शादा बनाकर हम इस्तेमाल कराते हैं. अच्छा, एक सवाल और जी, जो आप अर्के अजीब की वो पहली रेफरेंस कहाँ पे आती है जी? अर्के अजीब कौन से किताब में आती है? अर्के अजीब सर हमारे यहाँ जो कराबादीन है, जो फार्माकोपिया है, इंडियन यूनानी फार्माकोपिया, उसमें सर इसका तस्करा है. नहीं, जैसे हमारी आयुर्वेद में संहिता है जी, चरक संहिता इस टाइप का, आपके यूनानी में कौन कौन से है जी किताब जिसमें पहली बार आती है ये अर्के अजीब? यूनानी की जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक है, हाँ जी, तो ऐसा इस नुस्खे का कोई तस्करा नहीं है. बाद में जो बाद के जो हकीम है और हुक्मा है, उन्होंने इसका जो है तस्करा किया है. और जो सर आप शहद वाला नुस्खा पूछ रहे थे बच्चों के लिए, तो बेसिकली 1 ग्राम जाफरान ले लेते हैं और 20 ml
या 25 ml अर्के गुलाब ले लेते हैं, उसमें जाफरान तरीके से खरल करके मिला लेते हैं, फिर उसमें 100 ml शहद शामिल करके उस शीशी में महफूज करके रख लेते हैं और 2 से 3 बार उसको चटाते हैं। तो है कि बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है इसका, और ये इसकी स्टडी हुई है सर इन दिव्य पेपर मेरी नजर से गुजरा है, तो उसी में ये स्टडी पब्लिश हुई थी, तो उसका मैंने सोचा कि इसको मैं यहाँ पे शेयर कर दूं ताकि पब्लिक को एक फायदा हो, वो इससे फायदा उठा सकें। अगर आपकी थैंक यू डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी। यस सर, मैं रेडी हूँ। मैं सॉरी जी, स्वागतम। पीपीटी शेयर कर सकता हूँ? पीपीटी हाँ बिल्कुल जी कर रहा है, 1 सेकंड लगेगा पीपीटी शेयर कर। जी। Ziaur ji, please could you put your आपके टेलीफोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर थोड़ा चैट में डाल दीजिए। ओके सर, ओके सर। हेलो, वेलकम डॉक्टर मुंशी, वेलकम द्विवेदी जी, वेलकम। पीपीटी दिख रही है? आपकी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? नेक्स्ट स्लाइड। आपकी आवाज कट रही है, स्क्रीन दिख रही है जी। ओमिक्रॉन पे हमने आपको रिक्वेस्ट किया था, आपने हमारी रिक्वेस्ट माना, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। The Omicron variant of COVID-19 has been called a variant of concern by WHO, based on the evidence that it has several mutations that may have an impact on how it behaves. There is still substantial uncertainty regarding Omicron, and a lot of research underway to evaluate its transmissibility, severity, and infection risk. आपने जो ये इस तरीके का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, हम लोगों को इस तरीके का बहुत जरूरत है, क्योंकि आयुष में हम काफी कुछ बेहतर कर चुके हैं जो दूसरे हमारे इसके म्यूटेशंस रहे हैं, और मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन पे भी हम काफी बेहतर कर सकेंगे। When a virus is circulating widely and causing numerous infections, the likelihood of the virus mutating increases. The more opportunity a virus has to spread, the more opportunities it has undergoes changes. The Omicron variant has been detected in several regions of the world. WHO reports that the likelihood of the Omicron variant spreading further globally is high. It is currently known if the Omicron variant is more or less severe than other strains of the COVID-19, including Delta. Studies are ongoing, and this information will update as it becomes available. It is not yet clear that Omicron can spread more easily from person to person compared to other variants such as Delta. There is no information to suggest that Omicron causes different COVID-19 symptoms from other COVID-19 variants. Researchers are looking into any potential impact the Omicron variant has on the effectiveness of the COVID-19 vaccine. Although information is still limited,
WHO believe it is a reasonable assumption that the currently available vaccines offer some protection against the several disease and death. According to WHO, early evidence suggests that the people who have previously had COVID-19 could be reinfected more easily with Omicron in comparison to the other variant of the concern. The widely used PCR test continue to detect infection of the COVID-19, including Omicron. Research is ongoing to assess whether there is any impact on other type of test, including rapid antigen 1. The most important thing you can do is reduce the risk of the exposure to the virus. Wear a mask and cover nose and mouth. Make sure that your hands are clean, and when you put on the remove the mask. Keep a physical distance at least 1 meter. Avoid poorly ventilated crowded space. Open windows to improve ventilation. Wash your hand regularly. Children have a right to know what is going on, but it should be explained to them in an age-appropriate way. Invite your child to share what they have heard and listen to their responses. It is important to be fully engaged and take any fear they have seriously. If you don't know the answer, don't guess. Use it as an opportunity to explore the answers together. Remember that kids take their emotional causes and from adults. So even if you are worried, your little one knowing that they might be uncomfortable, try not to overshare your fears with your child. होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं, मैं उसकी बात करता हूं. होम्योपैथी में हम फियर को कंट्रोल कर सकते हैं. जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. हमारे पास देयर इज एन इग्निशिया. इग्निशिया इज द मेडिसिन जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकती है. और स्टेफिसिग्रिया इज द मेडिसिन जिससे हम हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं. उसके अलावा ऐसी मेडिसिन जिससे हम ऑलरेडी प्रीवियस कोविड-19 के केसेस में अच्छा वर्क कर चुके हैं, जिसमें हमारा आर्सेनिक एल्बम है, कार्बोवेज है, ब्राइनिया अल्बा है, देन जेसिमियम है, बेलाडोना है. उस तरीके की मेडिसिन को हम इस पर भी दे सकते हैं और सिम्टम्स के आधार पर हमको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा. आवश्यकता इस बात की है कि हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक को कम करना बहुत जरूरी है. अगर मैं समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स की बात करूं तो कल का समाचार पत्र इंदौर का लिखता है कि क्योंकि कोई भी डेथ अभी रिपोर्ट नहीं हुई है ओमिक्रॉन से, तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है. आवश्यकता इस बात की है कि जैसे ही हमको सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर को दिखाया जाए, इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए. जैसा कि प्रीवियस आयुष के डॉक्टर्स बता रहे थे कि योग अपनाया जाए या आयुर्वेदा अपनाया जाए या यूनानी के सिस्टम्स अपनाया जाए. तो जिसके पास जो सिस्टम नजदीकी सिस्टम के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उससे उनको सहयोग लेना चाहिए. डॉक्टर पवन जी, आपको बहुत सारा धन्यवाद हमको टाइम देने के लिए. मुझे लगता है मेरा टाइम इतना सफिशिएंट है. थैंक यू टू ऑल. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर द्विवेदी. एक्सीलेंट स्पीच. नाउ आई वुड लाइक टू अगेन रिटर्निंग टू आयुर्वेदा and now I would like to request Professor Vaidya P.K. Prajapati. Vaidya P.K. Prajapati is very senior dignitary from All India Institute of Ayurvedic Sciences. Professor Vaidya P.K. Prajapati ji, kindly unmute yourself, Doctor. Prajapati ji.
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हरिओम। डॉक्टर प्रजापति जी, मैं उनसे कनेक्शन संबंध स्थापित करता हूं। तब तक समय न नष्ट करते हुए मैं आगे बढ़ाता हूं अपनी यात्रा को। और हमारे साथ वैद्य राजन पटनकर सर हैं, हमारे गार्जियन। वैद्य राजन पटनकर सर फ्रॉम मुंबई, प्रैक्टिशनर ऑफ एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सूक्ष्म आयुर्वेद औषधि। वैद्य राजन पटनकर जी, मैं ऑडिबल टू हूं ना? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। यस, धन्यवाद धन्यवाद। पटनकर सर, मैं जिन जिन को बुला रहा हूं वो है तो कनेक्टेड तो है, लेकिन वैद्य राजन पटनकर सर, वैद्य प्रजापति जी। कोई बात नहीं, जब तक लोग नहीं आ रहे हैं तो मैं कुछ अपनी बात रख सकता हूँ, अगर परमिशन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सेंट्रल जेल है, वहां पर 2540 कैदी थे, जिसमें से 40 कैदियों को कोविड हो गया था, कोविड पॉजिटिव आ गए थे। उसके बाद हम लोग दूसरे जो 2500 कैदी थे, उनको जब होम्योपैथी का डोजेस दिया तो उन 2500 कैदियों में किसी को भी कोविड संक्रमण नहीं पाया गया और 6 महीने की हिस्ट्री देखी गई। 6 महीने बाद सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट ने हमको इस बात का सर्टिफिकेट भी जारी किया। क्योंकि एक क्लोज्ड कैंपस होता है जेल, तो वहां पे 40 लोगों को पॉजिटिव आने के बाद भी बाकी के 2500 कैदियों को कोविड का संक्रमण नहीं हुआ। तो इस तरीके से मेडिसिन जो थी वो काफी अच्छा प्रिवेंटिव का भी काम किया और इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी जुड़ चुके हैं। जी जी, तो मैं उनको टाइम देना चाहूंगा। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, थैंक यू। अरे वो एडवाइजर साहब का फोन आ गया था थोड़ा, इस वजह से उसमें लगे हुए थे। All the respected senior members of this group, no doubt this is a current topic, and Pawan Sharma ji is taking care of for all of us by giving some inputs on this particular aspect for the public and for us also. Till now, only theory is everywhere, especially for Omicron, and we are hoping that the vaccinations and our previous treatment may work on the same direction. As everywhere we know that the prevention is better than cure. So by adopting the preventive measure, wearing the mask or applying the nasal anu tail as told by the Agnihotri sir in his lecture, that a proper application of the anu tail, see, it certainly boosts the, and it has been proved. Now it is evidence generated by the Apollo and Gurgaon, one hospital in Gurgaon. They have registered some cases and shown that this nasal protective activity application of the anu tail, and by it found very effective. Paper is in the process of the review, so it may be published very soon. I think, no doubt, there are so many things are available in Ayurveda for Rasayana therapy. As we know that immunity, once again, immunity plays very important role in this particular sector. So by food, by drug, and by prevention, lifestyle disorder, we can manage the immunity by any drug, whether it is Unani, whether it is a Siddha, whether it is a homeopathy, whether it is Ayurveda. So by any mean, we request all the persons also joined from the different
Ayurveda and modern therapies, modern pathies to generate the evidence. Because again, as in previous cases, we have generated the evidence. In this case also, by studying the morphology and pathophysiology and pharmacology, we can protect ourselves and our relatives, our patients in such a way that we can again fight it. So as the new it came in India again, and Madanji has given a very fruitful advice and pathophysiology of this particular virus, so it can help for all of us. So on that basis, because we are very new in this field, very few cases are in India till date, probably 27 or 28. It may increase today to 30 or 35 cases in India. So we don't know the hazards, but as per the reports available from the different sources, that though it is more infective, but the symptoms those have generated by this virus are treatable, manageable. So, as someone is saying that the only pneumonia is not developed by this virus, so it is a very good for us. So, as we spoken in so many seminars and by the scholars, that the lung exercise, vyayam, yoga, pranayam, everything. So, composite a package of the therapy is required for all of us. No doubt. We will back to our original civilization to, because India is a very populated country, so it is a very tedious job to prevent, to maintain the social distancing, to maintain the hygiene. But when we are committed that we should maintain it, then it is for all of us, beneficial for all of us. So we will wait and see what happened and how we will manage day to day, probably within a very effective time. So last year in April, there very worst situation we will face. We have so we will again, because Holi is coming. So change of the weather probably creates the favorable situation for the flourishment of this particular virus. So after December, January, February, March, again it will flourish. So we will prepare ourselves to tackle it in all the situations with all our tools in the form of drugs, lifestyle, exercise, etc., which helps for us, nothing else. So study is going on from the suffering countries, and we will collect the information, and on that information we have to prepare ourselves, our drugs, our therapies and management. So hopes all are engaged in this along with the government, with the scientists, with the teachers, with the student community and practitioners. So in combo, we have to fight it. There is no problem. So thank you, Dr. Pawan Sharma ji, for fluorescing this information regarding the Omicron virus. Certainly, we find some new clues from the different society to how to combat in the situation. I have not much to say on this particular platform, because the Ayurvedic therapy, Vat Pitta Kapha, is not to take on this platform. So this is my views. In combo, we will do something. Thank you. Thank you.
बहुत ही अच्छा प्रजापति जी, आपने बहुत ही क्लियर समझाया। मैं मतलब ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये नया चैलेंज है हम लोगों के लिए। जी हम लोगों को कैसे कॉम्बैट करना है, ये अभी कोई गाइडलाइन भी क्लियर नहीं है। लेकिन मेरा मानना फिर भी है कि ऐसे वायरस सदियों से आते जाते रहे। जी ऐसा नहीं है कि ये आज हमारी लैब तगड़ी हो गई है, आज हमारी इन्वेस्टिगेशन तगड़ी हो गई है, तो हम इन वायरसों को जीनोम तक पहचान पा रहे हैं। पहले यस पहचानते नहीं थे, उसमें भूत गणादि वगैरह का वर्णन था, संक्रामक व्याधियों का वर्णन था। लेकिन आज चूंकि हम बिल्कुल जैसे वही वाली बात हो गई कि मौसम विभाग ने सबको अलर्ट रहना समझा दिया, सबको अलर्ट रहना समझा कि भाई आज तूफान आने वाला है, आज ये है। तो मैं आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी अभी जुड़े अपने साथ। हाँ, हरिओम नमस्कार नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम सर। नमस्कार बहुत नमस्कार। धन्यवाद आप। विष्णु जी नमस्कार। तो हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, सोमवार से हम अभी घर आ गए हूँ, तो ठीक है। प्रणाम प्रणाम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, सो मदन थंगावेलु ने बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है, आयुर्वेद कैसे हेल्प करते हैं, सारी एक्सप्लेन किए है। सो अभी ओमिक्रॉन वायरस पूरा वर्ल्ड पर आ रहा है, इंडिया पर भी, हम लोग के यहाँ पर भी आ गया है, आसाम पर तो नहीं है। लेकिन whatever the virus is there, we follow the protocol. Next, we have to increase or keep intake our immunity by taking some herbs, which is mentioned in our Ayurvedic books. For example, Tulsi we can consume daily, Gurusi we can consume daily, golden milk already mentioned, golden milk we can consume, and most important thing is kara, which is prepared from dalchini, long, adrak, and golmoric. It will gives us or gives you tremendous result. It can be prevent from this virus also. Along with, we have to follow the protocol, keep distance maintain, frequent wash hand, wear masks, all these things. And 7+, vitamin C, 7+ is also our good things. So if we consume, I think we can keep our body free from this virus. Thank you, namaskar, Pawan ji. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक बात हम बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत काढ़े के बारे में बात हम लोगों ने बहुत सारी की है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्लीज काढ़े को, अभी मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं सर जिसमें कि कम से कम 4-4 लीटर लोगों ने काढ़ा पी लिया है पूरे दिन के अंदर। तो हम काढ़े को जब काढ़े को प्रिस्क्राइब करें तो प्लीज हम जरूर कहें कि 100 ml लेना है, फांट की तरह बनाना है, उसको काढ़े की तरह नहीं बनाना है, फांट की तरह बनाना है, और उसको केवल 2 बार ही लेना है, और वो गरम गरम लेना है, क्योंकि उसका जो गरम का जो हमको वार्म एक्शन चाहिए सर गले में, वो गरम में ही मिलता है। सर सच बता रहे, 4 केसेस मेरे पास रिपोर्ट हुए हैं, हम एडीआर फाइल करने जा रहे हैं सर। वो 4-4 लीटर का, हमने किसने कहा तुमको पीने के लिए, तो एडवाइजरी पढ़ के सुन के लोगों ने इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो जितने भी हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि काढ़े को, क्योंकि अभी हम कल ही देख रहे थे, मिसेज ने मेरे कोट किया, एक हम आयुष क्वाथ लेके आए तो उसमें लिखा हुआ था कि कीप इन ए गिलास एंड बॉयल टिल हाफ, और आधा पीना है। ये काढ़ा बनाने का मेथड दिया ही नहीं है एडवाइजरी में। काढ़ा आयुष क्वाथ का मेथड है ग्रीन टी का, कि बॉइलिंग वाटर में आपको 1 मिनट बॉइलिंग वाटर में रखना है और उसको सिप करना है धीरे धीरे करके। तो जब भी हम किसी को प्रिस्क्राइब करें, प्लीज हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सर हमारे बहुत सीनियर हैं, सर का बहुत हम आदर करते हैं, और सर के जितने एडवाइस है हम सब मानते हैं। इसलिए चूंकि काढ़े की बात आई तो तुरंत हमने कहा कि हम इस समय बता दें, क्योंकि मेरे पास 4 ADRs फाइल हो चुके हैं अभी तक।
तो इसलिए हम इट इज लोगों को आवर इसका ड्यूटी, हम लोग बोलना यस चाहिए, इट इज यस आवर सर ड्यूटी। सर साथ में दूसरा ये बोलेंगे सर कि जैसे हम लोग सारी इम्यूनिटी के लिए बात करते हैं, तो इम्यूनिटी के लिए जो भी हमारे सिंपल ड्रग्स हैं हमारे पास, उनको सिंगल यूज जितना भी हम करें तो बी कॉशस, क्योंकि सीजन वाइज हमारे यहाँ और रीजन वाइज यूज करने के लिए बात की गई है। इस समय सीजन है जैसे च्यवनप्राश का, अक्टूबर से हम लोग खाना शुरू करते हैं, सभी को सूट नहीं करता है सर च्यवनप्राश, बहुत से लोगों को नुकसान करता है। मेरे पास एडीआर फाइल आई है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम फ्रॉम च्यवनप्राश। तो ये ध्यान रखा जाए कि जब हमारी अक्टूबर से लेकर मार्च तक हम 1 चम्मच लेते हैं उसको, और जब गर्मी आती है तो जनरली सभी चीजें हमारी कम हो जाती है तो हम उसको आधी चम्मच कर देते हैं। कुछ केसेस के अंदर जो जहां कंटिन्यूअस लोग चला पा रहे हैं तो सात्म और असात्म की बात आती है, तो सात्म और असात्म को ध्यान में रखते हुए भी हमको ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम वैसे तो हम बताते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट मिस कर जाते हैं। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं प्रिस्क्रिप्शन देते हुए सारी चीजें बताते हैं, लेकिन वो मिस कर जाते हैं। लेकिन हमको इस पे हैवी एम्फेसिस देनी है, अदरवाइज फायदे की जगह नुकसान हो जाता है सर। यही हमारा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सही समय पे सही बात आपने और डाटा के साथ बोली है। बहुत गजब, बहुत गजब। सर को देख के याद आ गई सर हमको, सर हमारे सीनियर हमको बहुत पढ़ाए हैं सर। पवन जी और बाकी सभी लोगों को मेरा खूब खूब नमस्कार। मैं भी इस कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ, अभी जुड़ गया हूँ, नमस्कार जी। जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं जस्ट अभी लौटा हूँ भुवनेश्वर से और पहुंचते पहुंचते इसमें जुड़ा हूँ। अच्छा तो अच्छा, चलने दें, कार्यक्रम चलने दें, मेरा नंबर जब आवे तो मुझे सूचित करें। नहीं बिल्कुल सर, राजन पटनकर जी के बाद आपका ही है सर। स्वागतम 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 स्वागतम। So now I would like to request with Rajan Patankar ji, kindly unmute yourself, Rajan Patankar ji. हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ अभी जरा डिस्पेंसरी में हो तो इसके लिए बात तो करता हूँ। बीच बीच में सभी सुन रहा था, तो मेरे ख्याल से कि चाहे वो ओमिक्रॉन हो या कोविड, उसके लिए जो अपना लाइफस्टाइल है उसको सही रखना। और अभी जो मेरे ख्याल से जो द्विवेदी जी ने कहा कि काढ़ा देते समय या उसको प्रिस्क्राइब करते समय उसका डोज, वो मेरे ख्याल से प्रकृति के हिसाब से एडजस्ट होना वो जरूरी है। और ओमिक्रॉन के बारे में अगर कहा जाए तो अभी भी उसके कुछ स्पष्ट लक्षण इधर भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए जो हम लोग जो पहले से करते आ रहे हैं कि अच्छी तरह से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, ये जो बातें हैं कि जो हम लोग सब कोरोना के कालों में जो कर रहे थे वही करना ज़्यादा उचित रहेगा। ओमिक्रॉन के मेरे ख्याल से जैसे जैसे लक्षण आएंगे तो उसमें भी अपना ये जो पथ्य है, और जैसा अभी शर्मा जी ने कहा कि च्यवनप्राश जो है या विटामिन सी, कि जिससे अपने लंग्स को ताकत मिलेगी, ऐसी जो चीजें है या जो गंडूश है, कवल है, ये नियमित रूप से करना। अगर इन शॉर्ट कहा जाए कि जो दिनचर्या है वो अगर प्रॉपर वे में रखी जाए अपने लिए और पेशेंट के लिए भी समझाई जाए तो दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल। थैंक यू। और पवन जी का एक जो कार्यक्रम है ये जो कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही सराहनीय है, और उसमें मेरे तरफ से हर समय कुछ ना कुछ चीटी के जितना सहयोग मेरा रहता है। तो और उनका जो स्नेह है वो ऐसे ही सब लोगों के साथ बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर। मैं अब आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभूषण झा, एक्स फॉर्मर एमेरिटस प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, BHU वाराणसी, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू सर, आपके आशीर्वाद की जरूरत। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। जैसा कि हम अभी सुनने को मिला पिछले 2-3 वक्ताओं को, तो खास करके जो ओमिक्रॉन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो 3-4 दिन से
वैसे जो कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 3 को इन्फेक्ट करता है, तो मतलब उस हिसाब से जिस रफ्तार से इसको बढ़ना चाहिए था, तो हमें लगता है कि चूंकि भारत में वैक्सीनेशन जिस स्तर पर हो चुका है और लोगों में जो इम्यूनिटी हासिल हो चुकी है, उसका परिणाम है कि वो और विदेशों की तरह यहाँ पर रफ्तार देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी जो इसका एक रोग का पक्ष है, सो डिजीज के बारे में जो कुछ भी हम सभी बराबर सुन रहे हैं कि जो लक्षण हैं वो लक्षण पूर्व में जो अलग अलग जो इसके वेरिएंट रहे, उन लक्षणों से थोड़ा सा भिन्न इसमें है, और इंटेंसिटी भी थोड़ा सा पिछले वेरिएंट से थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। और मैंने मदन जी से बात हो रही थी कुछ 3-4-5 दिन पहले, तो मैंने मॉर्टेलिटी के बारे में पूछा था कि मॉर्टेलिटी रेट इसमें, तो अभी तक मॉर्टेलिटी के बारे में कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसकी घातकता कितनी है, कैसी है। हाँ, बाकी जो प्रिवेंटिव पार्ट है, तो प्रिवेंटिव पार्ट में जैसे और डिजीज में हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो करीब करीब हमें लगता है कि वही सारे मेजर्स इसमें भी हमें एडॉप्ट करने की आवश्यकता है, और जो सारे इंस्ट्रक्शंस बराबर प्रचारित हो रहे हैं, कहे जा रहे हैं कि बराबर हम मास्क पहने, भीड़ भाड़ से बचें, हाथ को बराबर साफ करते रहें, और अपने जो आँख, नाक, कान, ये सब अंग हैं, उसको बराबर टच न करें। तो ये सब प्रिकॉशंस को जरूर अपनावें, और अपनी क्षुधा को हम बिल्कुल आकर दुरुस्त रखें। भूख अगर हमारी दुरुस्त रहेगी तो हमें लगता है कि प्रिवेंशन वाला जो काम है वो एक अच्छा मेंटेन रह सकेगा। तो अग्नि को बिल्कुल बना के रखना, और अग्नि को बनाए रखने के साथ साथ जो आहार हम लें, वो आहार भी खास करके प्रिवेंटिव पार्ट को ध्यान में रखते हुए कि सुपाच्य आहार हो, ताजा हो, और मतलब जो ऋतु के हिसाब से हम सभी विचार करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इस समय खास करके जो शरद ऋतु जस्ट समझे कि खत्म हुआ है, तो शारदी रोग माता, शारदी भीषण माता इस तरह से कहा जाता है। डॉक्टरों के यहाँ रोगी की भीड़ लगती है, सर्दी जुकाम, सर्दी खांसी बुखार, इस तरह के रोगियों की बाढ़ सी आती है इस सीजन में। और दूसरा सीजन पुनः, जैसे अभी हमारे प्रदीप प्रजापति जी कह रहे थे कि बसंत ऋतु और होली का, तो अभी होली में देर है, तो पिता से कुसुमाकर है ऐसा कहा गया है। उस समय भी डॉक्टरों के यहाँ रोगियों की भीड़ होती है। तो निश्चित रूप से ये दोनों सीजन ऐसे हैं जिसमें सर्दी खांसी बुखार और यही सारे मिलते जुलते लक्षण भी देखे गए हैं। इंटेंसिटी अधिक रही है तो पूरा निमोनिया का स्वरूप रहा है, लेकिन अभी वाले में लक्षण उस तरह का सीवियर नहीं है, लेकिन सर्दी खांसी बुखार सामान्य लोगों में देखने को मिल रहा है। तो बचाव, और बचाव के साथ साथ जो सारे उपचार अभी तक होते रहे, हमें लगता है कि अलग से इसके लिए कुछ सोचने की शायद आवश्यकता नहीं है। जो सारी औषधियाँ, संजीवनी है, क्या कहते हैं, अरे लक्ष्मी विलास रस है, त्रिवन कीर्ति है, मृत्युंजय है, ये सभी जो हम सभी परंपरागत रूप से चला रहे हैं अपने चिकित्सा में, जो सब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इन्हीं सब औषधियों से हमारा काम काफी अंश में। और जो काढ़ा इस समय प्रचारित हुआ है और जो बराबर कही जा रही है कि इसको देते रहना चाहिए, तो इन सब को भी बराबर हम अपने व्यवहार में रखें। और वही है, मतलब प्रिकॉशन पर पूरा, प्रिकॉशन में वही अपनी क्षुधा को दुरुस्त रखें, खान पान बिल्कुल ऐसा रखें
जो सुपाच्य हो और स्वस्थकर हो, ताजा हो, और इन्हीं सब से हमारा इससे बचाव होगा। नाक में मैं भी करीब करीब हमें लगता है कि 1000-1500 आदमी को मैं बताया होऊंगा। शास्त्री जो हमारे हैं वो तो है ही हैं। सरसप तैल का नस्य, और खास करके अगर थोड़ा बहुत भी कुछ लग रहा हो कि हमें सर्दी जैसा कुछ कंजेशन या कुछ कॉमन कोल्ड की फीलिंग हो रही है, तो हमें लगता है कि फ्रीक्वेंसी, वैसे तो मैं जनरली एक बार की सलाह देता हूं लोगों को कि 2-2 बूंद दोनों नासा में डालें, लेकिन अगर सर्दी का प्रकोप दिख रहा हो तो उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ाने की सलाह लोगों को देता हूँ। उससे लाभ भी मैं देखता हूँ। कहता हूँ कि भाई आप 2 बार या 3 बार डालें, और इससे बराबर लोग बताते हैं कि नहीं, ऐसा करने से बिल्कुल नेजल पैसेज जो है बिल्कुल क्लीन रहता है और काफी राहत इससे महसूस होती है। तो इसको भी मैं इसकी सलाह दूंगा कि सरसप तेल। अभी मैं लौटा हूँ, कल बलांगीर था, तो बालंगीर से चलते समय कुछ वहाँ के टीचर लोग साथ में थे, तो वो वकालत कर रहे थे नींब तेल का, नींब तेल के नशे का। उनका कहना था कि सरसप तेल से भी ज्यादा, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, सरसप तेल से भी अधिक नींब तेल जो है वो नासा को साफ करने में, जो कुछ भी नासा में जहाँ कहीं भी है चिपका हुआ, उन सब को निकालने में वो बड़ी मदद करता है। तो हम यह भी कहेंगे कि इसको भी अगर हो सके, और शायद बाजार में उपलब्ध भी है 10 ml की पैकिंग में, तो इसको भी प्रयोग में लेकर के देखना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। तो मैं यही मानता हूँ कि प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा, और जो रफ्तार है उस रफ्तार को देखते हुए बहुत इसमें आदमी को पेंडेमिक चिंतित होने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। और बाकी इन्हीं सारी चीज़ों को हम फॉलो करें पूर्व की तरह से। तो मैं पुनः पवन जी को हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ कि बराबर लगे हुए हैं विद्वानों को एकत्र करने में, और विषय पर जब चर्चा होती है तो विषय विशेष रूप से खुलता है, खुल करके सामने आता है। तो मैं हृदय से आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही आपने सार गर्भित बातें और बड़े सरल शब्दों में आप लोगों ने हमें बताया, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं आह्वान करता हूं, मेरे साथ डॉक्टर अतुल भारद्वाज हैं, डॉक्टर मोहम्मद साहिल हैं, डॉक्टर वैद्य संजय खेड़कर हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, यदि उनकी कोई ओपिनियन है, और जिनका भी मैं नाम लेना भूल गया हूं, आई एम सॉरी, तो काइंडली वो मुझे छोटे शब्दों में कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है सर, मैं विद योर काइंड परमिशन, कि यदि हमारे यहाँ लैब ज्यादा होती या हमारे यहाँ जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा होते, तो शायद इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती जो आज हमें मालूम पड़ रही है। ये न तो आरटीपीसीआर में पकड़ में आ रहा, तो न तो इसकी कोई किट बनी है अभी तक, और न इसके लिए कोई भी जेनेटिक लैब्स जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होंगी। हाँ, ये जरूर होगा, मैं कोरोना का आशीर्वाद मानता हूँ कि कोरोना के आशीर्वाद ने इंडिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अलर्ट कर दिया, बहुत परफेक्ट करने की चांस किए। और ये जो आएगा वो हमारी सब जेनेटिक लैब्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक बार खतरे के बाद हम लोग जग जाते हैं, तो सब लोग देखिएगा, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, वहां ऑक्सीजन प्लांट बैठे हर जगह, ऐसे कहीं हमारे यहाँ जेनेटिक लैब बैठेंगी तो ये संख्या और ज्यादा हो जाएगी। और उसके बाद नया वेरिएंट नहीं आएगा सर, उसकी भी क्या गारंटी है? ये नए वेरिएंट आते रहेंगे। यदि किसी चिकित्सक को कुछ भी सुझाव देने हैं तो प्लीज मुझे बताइए। डॉक्टर संजय,
Yes, welcome. नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते सभी गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सादर चरण पर गुरुजनों को। और जो बात चल रही सुन रहा था मैं काफी देर से, और पहले भी आपके पवन शर्मा सर, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आपके सभी वीडियोस में यूट्यूब पे भी देखता हूँ, कभी कभी लाइव ज्वाइन करने का मौका मिलता है तो वैसे भी देख लेता हूँ। तो आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है सर। ये अभी थैंक यू डॉक्टर। कोविड के बारे में यदि बात करें तो कोविड में ये ओमिक्रॉन, इसका भी कुछ मतलब लिथल साइंस एंड सिम्टम्स की कोई रिकवरी रिवील नहीं हुआ है कि कोई लिथल है या नहीं है। जैसे सेकंड वेव में जो कार्डियक और पल्मोनरी, इसमें ज्यादा उसका था वो इन्वायरमेंट, उतना तो अभी मिला नहीं, देखने को भी नहीं मिला और सुनने को नहीं मिला है। पहली वेव से सेकंड वेव ज्यादा लिथल थी। जो मतलब लास्ट के 1.5 ईयर से मैं लगभग कोविड में काम कर रहा हूँ, कोविड और पोस्ट कोविड में। और देखने मतलब अभी तक पोस्ट कोविड से बाहर, मतलब मेरी जो नॉर्मल ओपीडी थी वो नॉर्मल ओपीडी अभी तक शुरू नहीं हुई है, अभी तक भी मैं पोस्ट कोविड में अटका हूँ। जो पोस्ट कोविड के भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो मतलब रिवील होके सामने आ रही है। तो कहना इतना ही है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर पेशेंट्स को मिलती है पहले दिन या दूसरे दिन, तो पेशेंट को बाकी की चीजें होते हुए नहीं देखने को मिला है। जितने को ट्रीटमेंट दिया तो पहले 1-2 दिन में यदि उनको ट्रीटमेंट मिला है तो नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन या नेक्स्ट जो फर्दर प्रोग्रेस होती है डिसीज की, वो हुई नहीं है। और यदि नहीं मिलती है तो फिर वो जो फर्दर प्रोग्रेस होके पेशेंट जैसे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं या O2 पे चले जाते हैं, तो भी यदि हमें उस वक्त भी इंसाइट मिले कि नहीं हम ट्रीट कर सकते हैं, यदि ट्रीटमेंट का मौका मिले, तो मेरा ये अनुभव रहा है कि पेशेंट्स उससे ज्यादा जल्दी रिकवर हो जाते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। हेलो, हाँ ठीक। तो मैंने देखा है कि वो उससे पेशेंट ज्यादा रिकवर हुए और अच्छी तरह से रिकवरी मिली उनको। तो कहना इतना ही है कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है पेशेंट्स के, या जैसे मतलब पोस्ट कोविड में यदि हम कोविड में इस ट्रीटमेंट जल्दी करने का मौका मिलता है तो पेशेंट पोस्ट कोविड में ज्यादा तकलीफ नहीं देखने को मिली है या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन तैयार नहीं हुए। और आज की डेट पे हमें जो नए डिसीज मिल रहे हैं, जैसे कि पोस्ट कोविड में वेरिकोज वेन्स का प्रभाव ज्यादा मिला है पेशेंट्स में। वो 6 महीने के बाद या साल भर के बाद तैयार हो रहे हैं। या स्पाइडर वेनम, जो वेरिकोज वेन्स का एक टाइप कह सकते हैं, या जो प्री स्टेज कह सकते हैं वेरिकोज वेन्स की, वो अभी देखने मिल रहे हैं। या पोस्ट कोविड आर्थराइटिस, जिसे मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कह सकते हैं, तो वो कंडीशंस अभी मिल रही है। और उसमें भी ये देखा गया है कि यदि हम हमारे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल गर्विश की चिकित्सा अगर हम अप्लाई करते हैं वहां पे, तो उससे रिकवरी तुरंत मिल रही है, ये जल्दी आ रही है। तो इन शॉर्ट इतना है कि जो अभी भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बने हैं हमारे, कि जैसे लक्ष्मी विलास है, स्वर्णोसंत मालती है, या चतुष्टि प्रहरी पिपली है, जो भी अपने आयुर्वेदिक ड्रग्स है, पुष्कर मूल है या तुलसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये कालमेघ है, सुदर्शन है, तो इनसे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बस इतना ही है कि हमें ड्रग ड्यूरेशन जो है वो मतलब पेशेंट ठीक हो जाए तो बंद करने तुरंत, ऐसा नहीं है। पेशेंट्स 2-3 दिन में रिकवर हो जाते हैं, तो रिकवर होने के बाद भी कम से कम 15 दिन तक तो जो मेडिसिन चल रहे हैं वो चलाने हैं, तुरंत बंद नहीं करने हैं। और जो अगर कुछ है ड्यूरेशन में उतना देना है, डोसेस उसके जितने पेशेंट कन्वीनियंट हो उतने ही देने हैं। काढ़ों से भी अच्छे रिजल्ट मिल रहा है, आंसू अरिस्टों से भी रिजल्ट अच्छे रहे, रस औषधियों से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर ये होना चाहिए, मतलब ओमिक्रॉन भी आ जाए, कल कोई और भी म्यूटेशन आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये अभी तक लगा है कि सेकंड वेव ज्यादा लिथल थी, लेकिन उसमें भी हम लोग अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर अगर ज्यादा विश्वास रखते हैं तो उसमें से रिकवरी जल्दी मिली है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। और सेकंड, वेंटिलेटेड पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन से देखने को मिले हैं यार। और जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस है,
तो म्यूकोरमाइकोसिस में भी आयुर्वेदिक ड्रग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और बस इतना ही है कि थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ता है खुद के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर। और और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे ही हम मेडिसिन देते हैं, तो अगर इमरजेंसी में हम ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो हमें हमारे डोसेस या ड्रग्स जो है वो डेली चेंज करने पड़ते हैं, या हर 12 घंटे के बाद भी चेंज करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें पेशेंट्स के मतलब एज ए चैलेंज हम इमरजेंसी ट्रीट कर रहे हैं, यही सोच के हमें पेशेंट को ट्रीट करना पड़ रहा है, क्योंकि हर 12 घंटे के बाद हमें फॉलोअप लेना पड़ता है। और यदि इस टाइप से अगर हम पेशेंट को ट्रीट करते, तो जैसे वो एलोपैथ में हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, वैसे हमें भी वैसा ही काम करना पड़ता है। म्यूकोरमाइकोसिस में भी सेम कंडीशन है। अगर 12 घंटे में इंप्रूवमेंट मिल रहा है, तो 12 घंटे के बाद अगर हमें कोई नए मेडिसिन ऐड करने तो करने चाहिए, तो हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। 7-8 दिन में भी म्यूकर के पेशेंट्स रिकवर होते हुए देखे। तो ये कहना इतना ही है कि बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब अगर ट्रीटमेंट करने जा रहे पेशेंट्स को हमें ट्रीट करते, तो जैसे एलोपैथ्स वाले हैं वो 6 घंटे के बाद इम्प्रूवमेंट नोटिस करते, उसी टाइप से अगर हम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बस इतना ही, जैसे है कि चतुष्टय पर रिपीटली शुरू किए तो 12 घंटे के बाद 24 घंटे का उसका काम खत्म होता है, तो उसे बंद करना है, उसकी जगह पे पिपली ऐड करनी है, या फिर उसकी जगह पे 10 मिनट ऐड करना है, जो भी जैसे भी है। मेरा इतना ही कहना है कि इमरजेंसी के हिसाब से अगर हम ट्रीट करते, तो ओमिक्रॉन वगैरह कुछ नहीं, वो सेकंड वेव बहुत लिथल थी, बहुत मुश्किल था उसमें, लेकिन निकल गए सब लोग अच्छे तरीके से, उसमें भी रिकवरी देखने मिले। मेरे पास कोई मॉर्बिडिटी, मुझे मोर्टेलिटी देखने नहीं मिली पिछले 1.5 ईयर में। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। ये आयुर्वेद का मतलब थैंक यू आयुर्वेद डॉक्टर का संजय फॉर गैप है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर संजय। आयुर्वेद का चमत्कार है, निश्चित या चमत्कार। आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी तो कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई? नहीं, एक हमारे MS साहब चले गए, बाकी नहीं हुई। 99.99% नहीं हुई है। वाह, ये भी बहुत वो बड़ा। पर्सनल रीजन से क्या, वो बात दूसरी है, लेकिन ये है कि लेकिन हुई है एक तो, अदरवाइज नहीं हुई कोई भी मोर्टेलिटी। चलिए, और ये बात बिल्कुल सही बोली जो संजय बोल रहे थे कि अगर हमने कोविड के केसेस में, किसी भी केसेस में, क्योंकि इमरजेंसी है ये हमारे लिए, अगर इमरजेंसी मान के हमने ट्रीटमेंट किया है तो हमको उसका फायदा मिला है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक दवाई दे दी और हम वेट कर रहे हैं अगला सिम्टम तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको इमरजेंसी मान के ट्रीट करना है तो हम ठीक कर ले जाएंगे उसको। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा संजय जी, आपने बहुत ही अच्छा ऐड किया, बहुत ही अच्छा दी। मैं अब अंत में 15 मिनट की और कोई बोलना चाहेंगे? अच्छा, जी, कुछ हमारी बोलना तरफ चाहेंगे? से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है द्विवेदी जी के लिए। द्विवेदी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हमें वो आपने जो होम्योपैथी, वो जेल वाली कहानी जो बताया, जी उसमें जी। क्या प्रयोग किया जी आपने? आर्सेनिकम एल्बम या कुछ और? नहीं, ओनली आर्सेनिक एल्बम सर। रेगुलर आर्सेनिक एल्बम उनको दिया गया, मरीजों को डेली डोजेस दिए गए 15 दिन तक, और 6 महीने तक उसका ऑब्जर्वेशन देखा गया। 6 महीने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट ने कि किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार का कोई कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये बात थी पिछले दिसंबर की, और अभी तक भी, ये साल दिसंबर तक भी वो लोगों को कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये तो मैं आर्सेनिक एल्बम का रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। और हमारे यहाँ जब कलेक्टर के साथ हम डॉक्टर्स लोगों की मीटिंग थी, तो एक एलोपैथिक डॉक्टर ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था कि आर्सेनिक एल्बम इज ए स्ट्रॉन्ग पॉइजन, तो इतना दिया नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आर्सेनिक एल्बम एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन उसको RR कैट में टेस्ट कराया। यहाँ पर RR कैट है मॉलिक्यूलर मेडिसिन टेस्टिंग के लिए। उसमें हमने जब आर्सेनिक एल्बम एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन टेस्टिंग कराया, तो उसमें पाया गया कि आर्सेनिक एल्बम एज ए मेडिसिन इज सेफर देन ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि WHO ने बोला है कि हर किसी भी चीज में 10 पार्ट्स पर बिलियन, 10 ppb तक आर्सेनिक हो सकता है। और जो ड्रिंकिंग वाटर आता है, जो नगर निगम सप्लाई करती है ड्रिंकिंग वाटर, उसमें 6 पार्ट्स आर्सेनिक होता है। और जो हमारी मेडिसिन थी आर्सेनिक एल्बम, उसमें 2 पार्ट्स पर बिलियन निकला आर्सेनिक।
तो दैट इज सेफर देन ड्रिंकिंग वाटर। तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है इस तरीके से, उसका कोई साइड इफेक्ट या किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। मैं अभी भी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो एज ग्रुप को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उसके लिए सबसे बेस्ट अभी मेडिसिन जो अवेलेबल है दैट इज द आर्सेनिक एल्बम। और वो हर तरह के सिम्टम्स को कवर करता है, चाहे कोविड का डर हो, चाहे कोविड के सिम्टम्स हो, बुखार को भी कवर करता है, उसके खांसी को भी कवर करता है, ब्रीथलेसनेस को भी कवर करता है, मतलब कंप्लीट सिम्टम्स। जब आर्सेनिक एल्बम डिसाइड हुआ था तो एट दैट टाइम मैं सीसीआरएच के हेडक्वार्टर्स में था, बीइंग ए मेंबर ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड। तो उस समय हम लोगों ने जो चाइना में केसेस थे, उस समय इंडिया में कोई केस नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ 28 जनवरी 2020 की। तो जो लैंसेट मैगजीन में केसेस पब्लिश हुए थे उसके आधार पर, उनके सिम्टम्स के आधार पर वो मेडिसिन निकाली गई थी। और वो मेडिसिन आज तक कंप्लीटली प्रिवेंटिव, इम्यूनिटी बूस्टर और क्यूरेटिव तीनों स्तर पर खरी उतरी है। तो जैसा अभी डॉक्टर संजय बात कर रहे थे कि हर दिन हमको केसेस या डोजेस के डिसाइड करना होता है उसकी सीवियरिटी को देख करके, तो इस तरीके से हमने काफी केसेस पे दिया हुआ है। ऐसे मरीज जो 15 दिन 20 दिन अस्पताल में एडमिट रहे और वो ठीक नहीं हुए, तब हमसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के गए और 4 दिन 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद फुल्ली डिस्चार्ज होकर के आए। तो इस तरीके का केसेस हमने अस्पतालों में होम्योपैथिक दवाई विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर एंड कमिश्नर यूज किया और काफी अच्छा रिजल्ट मिला। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो मुझे ये लगता है जी प्रश्न सर, आप बता रहे हैं जैसे कि आपकी ये जो मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम, इसको प्रिवेंटिव तौर पर बहुत ज्यादा दिनों से ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाए, कुछ इस वही तरीके मैं की बात कर रहा था, क्या नहीं क्या होगा? नो पॉइजनिंग नहीं सर। मेरा जो रिसर्च आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुका है, अभी मैं आपको पवन शर्मा जी को दे रहा हूँ, वो सबको शेयर करेंगे। इस पे एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है कि आर्सेनिक एल्बम एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन इज सेफर देन ड्रिंकिंग वाटर। किसी भी तरह का कोई पॉइजनिंग के केसेस नहीं देखे जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। Very good. Dwivedi, the reason बहुत अच्छा the reason why I asked this, Dwivedi, केरल में स्कूल के बच्चों के लिए they have started this big program. जी वो पूरा systematically they are doing this, and I wanted to discuss, शायद if you can give me your telephone number, Dwivedi जी, अगर chat box में थोड़ा डाल दें तो we can continue. जी सर, जी सर, 9826042287 वेरी इजी, 982604। चैट बॉक्स में दे दीजिए द्विवेदी चैट सर। बॉक्स में दे देता हूँ, मैं चैट बॉक्स में भी दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में दे दीजिए सर। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है सर, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। मैं अब 10 मिनट आप लोगों के और चाहता हूँ कि मैं एक तो पहले सूचना दे दूं, कल 8 तारीख को हम थाईलैंड चलेंगे। थाईलैंड में क्या स्कोप है, स्कोप एंड प्रैक्टिस इन थाईलैंड, आयुष की, उस पर बात करेंगे। 9 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ वेटरनरी साइंस एंड मेडिसिन है, तो हम हमारे आयुर्वेद का क्या क्या वेटरनरी मेडिसिन हैं उस पर बात करेंगे। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात के हम लोग शाम के 6 बजे से 8 बजे तक टाइम कर चुके हैं, और क्षमा चाहता हूं मैं मदन थंगवेलू सर से कि मैंने उनका प्रेजेंटेशन बीच में रोका, लेकिन अब मैं प्रार्थना करूंगा कि आखिरी 15 मिनट में जो बचा हुआ आपका प्रेजेंटेशन है, काइंडली वो देते हुए कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। I think जो कहना था, I think we have touched on all the points कि प्रजापति जी is there and he has given us many ideas. Agnihotri ji has touched on some very very simple remedies अनुतैल की बारे में, और अब द्विवेदी जी has given us some very important clues कि arsenic amalgam how to be used. पवन जी हमारे साथ, our program had सिद्धा people, वो that is missing today. आज की प्रोग्राम में सिद्धा लोग है ही नहीं,
उनके पास भी है कुछ। जय प्रकाश जी को इनवाइट किया था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बिजी हो गए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ जी, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनके पास भी है ये काला मेघ का प्रिपरेशन, दो वेरी इम्पोर्टेंट preparations, Kabasur Kudineer or Nilabembu Kudineer. So that is a very important innovation. That is, wo South Africa wale, they are also wanting to use ये काला मेघ की प्रयोग करने. So हमारी प्रजापति जी से एक निवेदन है जी, थोड़ा सा आपके पास जो कुछ डेटा हो जी, उसको we need to take it to our collaborators in different parts of the world. और हमारी post COVID के बारे में जो we had some very fascinating results. Post COVID की यहाँ पे जी UK में 1.2 million cases होगी post COVID. Yes sir, yes sir. Post COVID की तरफ अगर थोड़ा सा और ध्यान दें, this will be very exciting. Or the same number, America में, same problem. 2-3 million people are suffering from post-COVID. उसमें अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा और CCRA से थोड़ा सा और करें, it will be very exciting for everybody. हमारे पास आया जी रिक्वेस्ट स्वीडन से. Sweden also has a big difficulty with post-COVID. So that is one request. कि थोड़ा post-COVID की तरफ अगर थोड़ा ध्यान दें and थोड़ा सा discussion इस तरफ भी. So I will contact you, Prajapati, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा discuss करने. Okay sir, no doubt. The other point I wanted to make is little more discussion within the country. अलग-अलग जगहों में some things are happening, but we are not coming together. मान लो हमारी clinical trial registry के अंदर काफी कुछ trials चल रहा है, but we are not bringing it up to a level where there is a little more national level dialogue. Not only in Ayurveda, but also with the other disciplines. यूनानी वालों को, सिद्ध वालों को अगर एक साथ ले आए थोड़ा सा, we'll get a little more vibrancy in our program. And we are looking forward to some guidance from All India Institute Ayurveda, from Tibia College or some place like this. Or perhaps even Lucknow can give the initiative. थोड़ा सा वो leadership, because the world is they are looking towards Hindustan. हमारे पास describing Ayush systems, but we are not giving we are not distilling our results. थोड़ा सा there is a little gap there. ज़्यादा नहीं, but there is a little bit of leadership coming, I think, because everybody is busy. Yes sir. Yes sir. We must do a little more on top of that. I don't know. Thank you sir for pointing out this particular issue, because I requested Pawanji to say something by the Sanjay Khedkar, because he is treating the patients and post-COVID continuously. I am in touch, and publication is ready. The data and meta-analysis is going on. So probably within few months we have the data. But I request Pawan जी, हमें लगता है कि ये बात जो सर ने बोली है पोस्ट कोविड पे भी हमको एक दिन डिस्कशन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत सारा डाटा बहुत लोगों के पास है, तो एक ट्रीटमेंट रेजिम थोड़ा बहुत तो कुछ ना SOP मिलेगी हमको कहीं ना कहीं से. तो इसको भी हमको ध्यान में लेना चाहिए. जरूर करेंगे. निकट भविष्य इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना है. द्विवेदी जी, हमारी एक केस आया है जी, कहाँ से? केरल में, त्रिवेंद्रम की सेंट्रल जेल में से. वहां पे ये आयुर्वेद की हरिद्रा खंड की प्रयोग, और in one cell is 6 inmates. उसमें one person had COVID and
no, 5 people had COVID, but 1 person was on Haridrakhand for some skin problem, and he remains COVID-free till date. So there are some formulations where we can even suggest prophylactic interventions, जैसे arsenic amalgam homeo वालों का और सिद्धा वालों का, where we have Kabasur Kudnir, and also from Ayurveda side we have many simple formulations. So that is another kind of suggestion that we should come together. थोड़ा सा वो CCRAs वालों का वो प्रोटोकॉल उसको थोड़ा टाइटन करने के लिए. और प्रजापति जी आपके वो रिक्वेस्ट, आपके वो कमेंट कि we must make one short video जी, पवन जी की मन में है वीडियो बनाने की कि how to make Ayush Khada. What is the correct procedure? It is with us. I will share you. हाँ जी. I will share you. बिल्कुल उसके अगर if we look in YouTube today सब कुछ मिलेगा. दाल कैसे बनानी है, चपाती कैसे बनानी है, कैसे, मगर खाड़ा की प्रोसीजर नहीं है. और करेक्ट डोज आता है. डोजेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, डोजेज भी. और हमारे राजन पटांकर जी की कमेंट कि प्रकृति के ऊपर कैसे इसकी कुछ एडजस्टमेंट हो, हाउ टू अंडरस्टैंड खुद. So that is one important. When we say garam pina, what is the temperature जी? यहाँ पे लोग बाग they don't understand garam की मतलब क्या. गर्मी में खूब काढ़ा पी लिया तो उससे उनको पाइल्स हो गया, ब्लीडिंग पाइल्स. हाँ ये देखो. तो गर्मी में कितना गर्म पीना चाहिए, ठंड में कितना गर्म पीना चाहिए, वो डिफाइन होना चाहिए. और नहीं, ये बात बिल्कुल सही है. बार हमने कहा है कि इट्स डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी. कितनी बार लोग ले रहे हैं, 4 बार लेने के लिए किसी ने नहीं बताया नहीं है. लोगों ने पूरे दिन जितनी बार भी पानी पीने की जगह काढ़ा पीने लगे लोग. पूरे दिन भर लोगों ने तो वो प्रॉब्लम तो आएगी. बिल्कुल सही बोल. और गर्म जहाँ तक है देखिए, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, चाय पीते हैं हम लोग, कॉफी पीते हैं हम लोग, गर्म पानी पीते हैं हम लोग, कुछ नहीं होता है. लेकिन इनसे तो प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि इसमें मेडिसिनल ड्रग्स है. लोग कहते हैं ना कि काम नहीं करती, हम ये कहते हैं देखिए काम करने लगी. तो इसलिए बहुत सुझाव है. जब हम काढ़ा रिकमेंड करते तो काढ़ा तभी लेना चाहिए जब हम ससेप्टिबल एरिया में गए, तो सस्पेक्टेड है कि उस एरिया में गए तो 2-3 दिन के लिए लेना चाहिए. ये कंटिन्यूअस पीने जैसा मेडिसिन है, वो मेडिसिन है काढ़ा. जैसे उसमें दालचीनी है, शुंठी है, जो कुछ भी ये मेडिसिन है. तो उस मेडिसिन को अगर हम सस्पेक्टेड जोन में गए, हमें डाउट है कि हम कहीं पे जाके आए, तब वो प्रिवेंटिव एरिया में लेना चाहिए. अदरवाइज वो डेली लोगों ने डेली लिया है, इसके वजह से वो पाइल्स और अदर जो भी जीआई ट्रैक के जो भी सिम्टम्स मिले, उसके रीजन सिर्फ वो प्रिवेंटिव फॉर्म में डेली लेने के बाद हुआ है. यदि हमें सस्पेक्टेड जोन में गए तो ही लेना चाहिए. ये मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन है 1.5 साल का. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सस्पेक्टेड जोन में जाने के बाद ही लेना चाहिए. और वो 2-3 दिन के लिए लेना चाहिए. वो मतलब यदि कुछ होना है तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा, नहीं होना है तो वो 7-8 दिन 15 दिन महीने भर क्यों लेना है. सॉरी टू डिस्टर्ब. संजय जी प्लीज पुट योर आपकी टेलीफोन नंबर भी अगर ले लें जी चैट बॉक्स में थोड़ा. संजय जी. जी सर, मैसेज करता हूँ सर मैं. हाँ जी. पवन जी हमारी तरफ से यही माय फीलिंग इज कि at least we are discussing ahead of the game, or we are looking around कि South Africa में क्या चल रहा है. I will, which शायद प्रजापति जी missed that link to the, I will send it to प्रजापति जी. वो South Africa John Campbell वाले उनके वो वीडियो. And I think this. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. The connection जी between the countries at the people level, जैसे what the interaction that is happening now, I think this is going to be very important. People to people interaction. Yes. सर का प्रेजेंटेशन भी पवन जी जरा सा दे दीजिएगा कि हम थोड़ा मिस किए शुरू में. बिल्कुल जी, बिल्कुल. जरूर. Pawan sir, one thing, can I speak? Sir. Yes. The Kada
it has to be dependent on the anupana based on the prakriti of the individual. The pitta prakriti person, if we take her in a more duration, he will get these set of symptoms. So it has to be mixed with some ghee. Then only it is beneficial for him if he is taking in a longer duration, or he can take with sugar. So this is my question. Depending upon their prakriti, we have to change the anupana for that. Kada also we can mix certain things. That is only what I have to add for this. Thank you. I think Agnihotri ji wants to add something. Or Agnihotri ji, namaskar ji. ये खाड़ा के ये घी के बार जो बताया जी उसके थोड़ा. Actually, I am waiting for my turn. Naturally, the webinar is just reaching to its end. So, namaskar again. Thanks, Pawan Sharma ji. My regards to all the national and international dignitaries, and again, especially for their contribution of today's webinar. Well, it was a complete Samudra Manthan. It was complete a Samudra Manthan, that the ocean churning. And the one desire which has been fulfilled by today's speakers is 11 speakers out of 16. So Pawan Sharma's 11 is now completed with their thoughts and all that. It's very difficult for me today to comment upon today's submission, because it was really wonderful. But few things I would like to share, because it is a notable point. The first one is appearance of our Ziaur Rahman Siddiqui on his first presentation. He was a little bit scared and saying that I am very young and how I will do and I will do. So I congratulate him that he has got a repeat chance very shortly, and he presented in the same way as we were expected. Very naturally, when he talked about the Unani system, today's the combination of all Unani and homeopathy. Dr. Dwivedi is really, his work is worth appreciating with the arsenic alva. So our point is that we were very much friendly with COVID treatment, with all the pathies contribution up to October. We were scared that what Vijayadakshmi, what Ram Ravan Yuddha, and then Deepavali, and after the onset of the wedding ceremony will result in a form of any spread of the COVID-19 which was existing on the day up to the Delta variant. But it unfortunately precipitated in a form of the Omicron involving the South Africa. So we all became alert, since we have got experience. Our previous experience made us more and more aware to see. But luckily, much symptoms are not precipitated by now. Resultantly, we still confident that whatever experiments we did with our different pathies, they all got success. Special thanks to Dr. Dwivedi for his arsenic album, which has been given to the prisoners, and 40 prisoners, they got wonderful favorable result, and the rest will be given the preventive dose, and the things are very okay. So goes the case with our Pradeep ji. His submission regarding the proper taking the proper dose of kala is very important. Dr. Swagat as well as Pradeep, our sir Professor C.B. Jha told the same thing, that it should be rational. Dose must be rational, along with the in special event to the dosage prakriti of an individual, of the user. If it will not, the result will be negative in a form of the acne vulgaris, in a form of piles, in a form of bleeding piles. So we Ayurvedists and we of different pathies experts are supposed to put forward the remedies along with the information that it should not be taken in overdose. If at all it happens, the medicine becomes the curse. The medicine becomes the poison. It's very simple. You cannot take half a kg sugar at a time. Even the food stuff, it is said that aharas sambandham vastu rogastu ahar sambhava. Over dieting itself will damage. So goes the case with the overdose of the medicine.
So this is our submission that along with our Professor Sharma ji from Assam, our Madan sir, so he is a key bunch of every problem. May it be medical field or it may be any field. I have become a fan of him. And you see, one thing I could not submit, that now the havoc is created in such a way. My younger son is there from US, and he is just waiting for the date from US embassy that it should be stamped, then only he will return. He came by 24th of November, and he is very much expecting to go in the last week of December. So things are abruptly disturbed out of this onset of this Omicron. So what we think that we should be aware, we should be careful. The pranam therapy is wonderful. Again, for keeping distance, it is better to keep pranam instead of shaking hand. The old one is still gold. So with that package, with that protocol, we can keep on doing the things like the churning of the knowledge and spreading it throughout the globe, so that we can save the suffering humanity. Thank you all. Thank you. Over to Pawan Sharma sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Tomorrow for short webinar we are meeting again. Thank you very much. Good night. Good night, sir. Okay. Good night. Namaskar. Namaskar to everybody.